हेलो गाइस, मैं रुस्टीम चैनल एक बार फिर से जीत लिए फील बॉडी कैम बहुत चल रहा है तो इसलिए हम स्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि बॉडी कैम का पीवी भी आ जाएगा इसी बहाने। लेट्स सी। ला 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 हेलो मीडियम केम छो। क्या मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो 594 पड़ेगा। Fast, do we have any FUs right now available? 10 for back and it up David, could you please take a cadet just because I cannot take him. There's a coach. I have one. Get him also, no? If you can. Okay, I'll just assign him with me. नील सुनना, इसको ले जाना अपने साथ just because मैं नहीं रख सकता आज के लिए. Is it Yuvraj? ओके सर. It's so Yuvraj. आओ 10 युवराज for शर्मा me. सर, Take him. He was with us. Yeah, I assigned him with me. Thank you. आ जाओ युवराज जी केम छो। हाँ एकदम मजा में. यार आपका नाम? युवराज नाम के तो सीनियर भी हमारे पास एक हाँ हाँ एक नाम है उनका, पूरा नाम भूल गया मैं. मुझे शर्मा जी बुला सकते हैं. रघुवंशी. यस यस रघुवंशी सर. हाँ हमारे पास सूर्यवंशी भी हैं, रघुवंशी भी हैं। तो युवराज शर्मा भी है, युवराज रघुवंशी भी हो गया. आप शर्मा जी बुला. वैसे आपका नाम क्या है सर? ऑफिसर नीलिश, सीनियर ऑफिसर नीलिश दिस साइड। केम छो। कैसे हैं जेकब सर? करता हूँ कॉल करता हूँ. सर आओ युवराज. हाँ सर आपका नाम नहीं सुना मैंने ध्यान से, थोड़ा कानपुर में हड़ताल था. मेरा नहीं आपका तो पता है जेकब सर. आपका +2 will be responding to the latest 13 calls on Los Santos Freeway. यार मेरी गाड़ी क्यों निकाल नील लेते हैं इसका सारे के सारे. बोर्ड लगा दो उस पे. एक टिप दूं तेरे को मैं. हाँ ऊपर रखा है. ये गाड़ी का कलर क्या हुआ? अरे वो वापस नीचे आ जाते हैं. अच्छा है. पीछे बैठे. ओके. Blake, let's go on code 1. Salisha will call. With charge unit on the left 67 Carrera 911 RS. चार्जर यूनिट कहाँ से लाए? चार्जर यूनिट बताओ. और बताओ युवराज सिंह जी. युवराज शर्मा शर्मा जी. हाँ मैं मुझे कोड थोड़े रट्टा मार के याद हो रहे हैं, लेकिन मुझे बोलने का जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल मुझे याद नहीं रहता. David, I need you to handle the security of. क्या बोल रहे हैं? I'll give you a call. 10 for will be 70. Copy. I'm just switching to 1 point. One second. Where do you need charger? Can I get a 20? I'll get the Los Santos Freeway Grand Senora Desert. रानू सर कैन ड्राइव चार्जर. It's a Porsche Carrera. हाँ वो PU सर्टिफाइड है हेड Which चार्जर. bound it is? City or stationary currently at R20 sir. Currently stationary, not heading anywhere. आओ पहले कोर्ट हाउस थोड़ी घसड़ कम करा देते हैं, फिर हम ले लेंगे सिचुएशन. हटाओ Yeah, सर. visual move the चलते हैं ना थोड़ा. the radio. Give us the थोड़ी radio. एकदम से घसड़ होगी ना. Turn for shift to radio 1.4 please. पता नहीं मतलब आई डोंट थिंक कि लोग इतने एक्साइटेड होंगे. आई थिंक क्योंकि रॉबर्ट पे हैं, सर पे हैं, तो पीडी से तो हेटरेड है, तो शायद आएंगे सपोर्ट करने दूसरी पार्टी को लोग थोड़ा. ऐसे युवराज जी हाँ बताएं क्या सोच के ऑफिसर बने हो तुम? सर. एक्चुअली ये सोच रहे हो कि तुम क्रिमिनल को पकड़ोगे? नहीं क्रिमिनल को पकड़ने के नहीं, मतलब एक्चुअली जो सिविलियंस होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारा दिक्कत हो. जैसे कि मैं भी जब शहर में आया था ना. कितने सिविलियन को जानते हो तुम जो सिविलियन है शहर में, ये बताओ. कैसे बता जेकब सर, आपको पता है मेरी सिचुएशन के बारे में? वो वाला कौन सा वाला? जो मेरे साथ मतलब वो करके आया था, मैं फिर से कल लैंड हुआ जो.
मैं बताऊं कैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ? मतलब कुछ देखो सिचुएशन देखो हुआ था उसकी वजह से कुछ तुम्हारी जिंदगी में बाहर हुआ तो वो मत बताओ, और जिंदगी में बाहर अंदर हुआ है तो नहीं बताओ। इधर ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वो क्रिटिकल है, मुझे उस वहां पे बताना पड़ेगा। मतलब लॉजिकली मैं कल ही लैंड हुआ हूँ शहर में, कल ही। हाँ फिर ठीक है, छोड़ो। ओके नाइस, ओके समझ गया ना आप? हाँ समझ गया। हाँ तो हाँ तो फिर ये मत बोलो ना हाँ कि जितने वही मैं लोगों से ठीक से मैं बोल मिला रहा हूँ हूँ। मैं। हाँ तो हाँ मैं उस हिसाब से अभी कुछ किसी भी आदमी से नहीं मिला, ऑफिसर्स को छोड़ तो के, फिर बोलो नए उस आए हिसाब शहर से। में, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ नहीं उस आप फिर आप पूछेंगे कि आओ कल ही आए, आओ। कल ही ये कैसे ये ऑफिसर पहली बन गए। पहली बात तो ये ड्राइव थ्रू पार्किंग है, तूने बोला पार्किंग में गाड़ियां लगाए हैं। अच्छा रॉबर्ट सर का केस है अभी? 3:30 direct to आए dispatch. आए हो We'll be needing a ground unit, okay? चल भाई, Let's see मांग what's रहा है happening. वो, हम्म, चलो चलो क्या आ जाओ काम? आ जाओ। कौन मांग रहा है क्या? कोई क्रॉनिक यूनिट मांग तो रहा था, पर क्लियर सी नहीं आई वो बात। शेरशाह कर रहा है ना, आई थिंक रिस्पॉन्ड, इसलिए मैं रुक गया। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे भी चाहिए होगा ना, कौन For कौन switching to radio 1.4. पर अभी तो नहीं कोई है, भी नहीं है। कोई नहीं कोर्ट है, केस गाड़ी डेविड इतने साहब देख सारे। रहे थे पेन वीडियो। गाड़ियां इतने सारे हैं लेकिन लोग नहीं। ये आई गेस मेयर की गाड़ी है, तो लेट्स लीव इट। ये तो मेयर की है, हम्म, कर देंगे सिक्योरिटी बैरिकेडिंग कर देंगे। और सर जी केम छो विराज जी? अच्छा कौन सा? अच्छा हाँ अच्छा मैं सोचा दूसरा ले रहे थे। बढ़िया चलो विराज बढ़िया। विराज जी बोल रहे हैं तो आवाज विराज, नहीं आ रही है। अच्छा इनका नाम विराज है। ओ हेलो, अच्छा नहीं इनका नहीं आ रहा है आवाज। बोल ही नहीं रहे हैं, वोट भी नहीं कर रहे हैं। सर गुस्सा है शायद। हेलो, अब आ रही है? हाँ आ अब रही है आ आ रही रही है है, आ हाँ। रही है, हाँ। क्या है? हाँ अरे सुनिए रिप्रेजेंट जो भी कर रहे अंदर हो आ रहा मुझे? है, हाँ जो भी अंदर आ रहा है सर्च कीजिए, आईडी कार्ड चेक कीजिए, एंड लिथल्स रहेंगे तो कन्फेस्टिगेट कर दीजिए। टाइमिंग बताएं कितने बजे स्टार्ट हुआ अभी केस? जो ये जिसने केस किया है वो आया नहीं है अभी, हाँ तो तो वही उसकी जब वेट हो रही है। तो उसके लिए ऑलरेडी ऑफिसर साइंड है, तो वो आके बता देंगे हमें। हम तो हमें लगा था स्टार्ट हो गया है, बट बेफिक्र रहे, सिक्योरिटी के लिए हो गई है डिटेल पूरी। हाँ ठीक है, ओ ये आज मजा आएगा बैंडेज केस में। बैंडेज बैंडेज उनसे मांगे हमारा अटैक बैंडेज है यहाँ, अटैक है। देव अच्छा बैंडेज। बैंडेज है। दोनों लड़के अरे बैंडेज ने 10 दे सकता हूँ। 10 ही दे देंगे यार। पेपर बताओ। चेक करो चेक करो चेक 1 करो। 4 अरे पेपर यार बताओ। 143 ये लो। हाँ, इधर आइए। एक सेकंड थोड़ा सा सर्च करवा लूँ अपने आप। हाँ हाँ सर्च करे। शगुन का 1 रुपया। ठीक है चेक कर लो। मैं भी करूंगा रेस। बात भाई शेन, तू क्यों चाहता है कि ऑफिसर भी पार्टी बार हो बार रही मैं है। तेरे को जेल में डालता रहूं? आई पार्टी डोंट हो लाइक रही इट, कम इनसाइड। ऑफिसर क्या हो रहा है? हमको नहीं किसी का कोड नहीं आते ही दूसरे की गाड़ी ठोकना, फिर ऐसे गाड़ी बीच में रोड पे रोक के नंबर प्लेट चलाना, नहीं है, illegal। बोनेट गायब है, कहीं भी नंबर प्लेट विजिबल नहीं है। अनलाइसेंस ऑपरेशन का डालो इनका, कहीं नंबर प्लेट नहीं दिख रही है। जल्दी आगे बढ़ाओ। नंबर प्लेट नहीं है कहीं भी। मुझे एक दिन एक अफसर बोलता है कि सर ये जानबूझ के बम्पर तोड़ के लाते हैं। हाँ मेरे को भी लगता है ये जानबूझ के पोल भी तोड़ते हैं, जिससे अच्छा हमारे वैसे पे सर पोल गिरे। मुझे अलाउड है ना सर्च करके वो बता देखने का? अब अलाउड है तुम्हें? यार हाँ। अलाउड तो नहीं, है। अभी- प्रोसेस क्या होता है अभी पता है उसका सर्च तुम्हें? करके- प्रोसेस क्या हाँ होता है पता है, मतलब नॉन लीथल ले जा सकते उसका? हैं कभी मतलब किसी basically- को डायरेक्ट सर्च नहीं करते, कभी नहीं। अच्छा यू हैव मतलब टू उनको फ्रिस्क, परमिशन। यू हैव टू फ्रिस्क देम। तुम पहले इधर आ जाओ, अच्छा। कुचल के जाएगा। फ्रिस्क भी तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। अच्छा तो अच्छा अगर वो अंदर जा रहा है उनको बताओ कि इट इज हाँ। कंपलसरी टू गेट फ्रिस्क बिफोर यू गेट ओके इन। अच्छा कुछ उसके बाद यू कैन आस्क हिम इफ यू डोंट माइंड, अगर कुछ सस्पिशियस लगता है, इफ यू हाँ। डोंट बोलो माइंड क्या कैन है? गो फॉर अ सर्च। अच्छा ओके अगर वो बोलता है कि यस यू कैन, ओके तब तुम Hello, जाओगे। police अगर वो officers.
Hey, what's up? Ravon, I want to wish you guys good luck today. why us? I think it's not against PD, right? Case is not against PD. It's against an individual, right? I think it's a It's a Yeah. SPD case. What do you mean? I mean, so it's against a specific officer, right? Not against whole Yeah, PD. no, not World PD. Nah. Yeah. But So still, like, we he's don't your need guys' love. friend, right? He's your colleague, right? He's your, like, family. you are also Yeah, you are he's also like my friend. He is also our friend. The whole city is our friend. Oh, yeah, I'm your friend. I appreciate that, man. What's your name, man? Ravan, you forget me, man. I created your first ID card. Oh, yeah, you took my picture. Yeah, now I remember. Yeah, you a good guy, man. For real. And now you're pressing Hey, the charges look against at my this nice officer. picture he took from me, man. See that? Shoo, yeah. Nice picture. अच्छा मुझे करो frisk. अच्छा एक सेकंड हाँ करे. ओके कर रहा हूँ हाँ पर्सन समथिंग सस्पिशियस मुझे लगा कुछ सस्पिशियस तो आपके पास वो गन था हाँ, कुछ पॉइंटिंग है या कुछ मेटालिक है. हाँ सस्पिशियस लगा मेरे कुछ को चुभा इसलिए, आपके हाँ। हाथों में. हाँ, तो अब चुभे, आप मुझसे हाँ। पूछोगे, सर, आई थिंक यू हैव समथिंग विच इज मतलब कि कैन बी पॉइंटी और मेटालिक इन नेचर. ओके हाँ, so can I go for a search, or if you mind, you can look yourself and go and keep it outside somewhere in your car or somewhere in your motor. ओके समझ गया ओके Okay. तो मतलब जैसे कि केबल कटर भी हाथ में लग सकता है ना केबल कटर हो गया ब्लेड्स हो गए ये भी तो हाथ में लग सकता है हाँ, चुभेगा? anything which is हाँ रख के आने के बोल, जिससे तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज जिससे वहाँ पे वो हाँ। किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फेंक के मार सकते हैं. हाँ समझ गया हाँ, इट्स अ तो कोर्ट उसके हाउस, मतलब वो डॉक्टर्स के पास मुझे वो दिखा था क्या बोलते हैं उसको टेजर दिखा था वो अलाउड है मतलब डॉक्टर तो अपनी सेफ्टी के लिए टेजर कैरी करते हैं, वो तो इशूड सर्विस इशूड है, हाँ। राइट. और डॉक्टर्स अच्छा ये नहीं पता था मुझे। डॉक्टर्स डीओजे अच्छा स्टेट डीओजे के पास State. गन्स भी होंगे क्या डॉक्टर स्टेट, सुन ले मेरी बात. हाँ अच्छा डॉक्टर स्टेट ओके and DOJ, they have the entry Okay. to this complex. ओके Apart from that, nobody has entry to this complex. We can lock the gates, they cannot lock and lock the gates. So anybody who does not have this access, they need to be Okay. frisked. अच्छा ओके You are not going to Done. frisk any lawyers there, you are not going to frisk any state officials there, right? ओके It's their place of work. ओके Same way, if anybody is coming to PD, irrespective Okay. of whatever situation they are coming just to talk, chit chat, and all, if you are bringing Okay. anybody inside PD premises, means reception, the gate after Okay. reception, Plus one back on you have to the always frisk them. ओके डन सर समझ गया In that case, even if a lawyer, 76 because that is North our California workplace. Way, but we'll be refueling on the way. 345 back on radio 1 plus 2. Control dispatch, respond to 13th at North California, please. लूसीफर सर का है, लूसीफर सर याद आ गए आपके उस पे रुके. अंदर 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 हेलो सर. नील सर अरे कैसे आउट हैं? ऑफ रीच है. और जमावल जी कैसे हैं? सर दर्द हो रहा था बहुत ऑल ज्यादा. गुड है जी। एक सेकंड. और बताए जमावल जी, कैसे चल रही है राजनीति आपकी? एक नंबर एक नंबर एक नंबर। मैंने कहा जरा फ्रिस्किंग कर लें जरा हमें फटाक से। ये करेगा. हमने नया रखा छूने के लिए. Yeah. क्या बात अभी यहाँ नहीं करनी, अंदर करेंगे आराम से. अंदर 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 अभी तो कुछ, करना है। अभी तो पार्टीज आई भी नहीं I है. need to refuel. अच्छा नहीं बता तरफ से ना तो आओ थोड़ी वार्तालाप करें. बताओ जम्बाल जी, क्या चल रहा है Jamal, जिंदगी में I आपके? think that is your car, right? which one? Big one. The black one? First one. So SUV. Yes. Can you please park it in the park because हाँ. ये drive through है. Faisal, ये ड्रॉप के लिए यूज करते हैं ना Actor मोस्टली. 67 of Dominator GT to North California, get a ride along and can you please respond? Here is my favorite reporter, only reporter in the city. कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? कोर्ट केस हो रहा है. From this. हो रहा है आपने. हाँ, तो कैमरा कहाँ है? कैमरा निकाल लो अपना. हाँ कैमरा सब लेके आए इक्विपमेंट. हाँ, जैसे कि हम देख के जाने देंगे इन्हें. सामान रख दें क्योंकि हाँ, चेक हाँ. बैक करोगे. हाँ वही. हाँ, आपको छेड़ेंगे थोड़ा सा अभी हम. सारे चुभने वाले चीजें रख के आने के लिए बोलेंगे पहले ही. कहाँ जा रहे हैं वैसे अभी? अच्छा. अरे आप मेन हो, आप अभी कहाँ जा रहे हो? इधर आओ. अरे ये कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? भाई वो डेविड सर को बोला था सिक्योरिटी के लिए. डेविड सर ने रिप्लाई तो किया. देख खुद ही नहीं है यहाँ पे. लोग आ गए हैं यहाँ पे. हेलो सैम मॉर्गन. फोन मिला है ना डेविड सर को. रुको. हाँ, मिलाते हैं. रॉबर्ट सर को फोन मिलाते हैं. डेविड सर को दिए उन्होंने. रॉबर्ट विल्सन नंबर नहीं है. रॉबर्ट विलियम
अरे ब्रो हु यू डैम शॉटी वो कॉपिंग मी। अरे कहाँ पर है तू? आया तू वापस चला भी गया, तू बताया भी नहीं मेरे को इंडिया आके। कमीना कुत्ता रामी। अंदर ही है शायद ये लोग, अंदर ही है शायद ये लोग। आई सी 2 ट्रैकर्स इनसाइड। अंदर ही अंदर ही अंदर ही। मेरे को नहीं चाहिए भाई, तुम प्रेजेंस दिखा दो वही गिफ्ट। बोलो भीड़ से इकट्ठी हो रही है। ये कम्युनिकेशन रेडियो क्या है इसका कोड कैसे? उम्मीद तो नहीं है पीडी वालों से कुछ, बट ठीक। पीडी वालों से तुम्हें उम्मीद नहीं है? हाँ यार वो आज तक Let me check different radios 1.86 हाँ आए हो 1.6 की 1.8 अच्छा हुआ है जब से 6 है बाबू 6 है। ओके मेरे को बाबू बोला आपने सर। नॉट इन दिस रेडियो बोला ये इज बिजी विद द कोड प्लीज। अच्छा अच्छा 1 डब्बे थे आपका 2 डायरेक्टर ऑफिसर रॉबर्ट एंड राय। हेलो सर। हाँ नील सर, हम हैं ये कोर्ट के गेट पे। आ जाओ ना, अकेले हो तो आ जाओ, मेरे को राइड अलोंग बना लो। नहीं नहीं अकेले नहीं है, हमारे साथ जेकब है, हमारे साथ कैडेट भी हैं, हम यहाँ ड्यूटी पे हैं। आपके साथ कौन कौन है? मैं यार आया हूँ, कोई है ही नहीं, अकेला पड़ा हूँ। कुछ कोर्ट में बैठे हुए हैं, कुछ सिचुएशन में है कोई। वही एक बारी केस है क्या कोई आज? हाँ रॉबर्ट सर पे केस है। क्या कहते हैं पेजर निकालें पेजर निकालें और लिख दे लुकिंग फॉर अ राइड अलोंग। अरे वो सब वहाँ बैठे हुए हैं यार, चलो कोई नहीं, वो सिचुएशन में है, खाली है नहीं, खाली है नहीं। ओके चलो एंजॉय करो। स्टार्ट होने वाला है ऑफिसर। ये ऑफिसर भी अंदर है, सस्पेक्ट सभी जो मतलब जो सस्पेक्ट कह रहा हूँ जो सेकंड पार्टी है वो भी आ गई है। अब इंतजार किसका हो रहा है ये पता नहीं है। जज साहब का जज साहब तो अंदर ही है, शायद से तो अंदर ही है। कैसा कहता मेरा भाई? मुझे लग रहा है आप ही का कर रहे थे। कवरेज नहीं मिलेगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे हमें कोई भाव नहीं देता शहर में। हम कह रहे हैं छोड़ो। बताओ। अरे हम कह रहे हैं छोड़ो, पीडी बन जाओ, आओ ज्वाइन कर लो हमें। आप हमें ज्वाइन कर लो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बहुत आगे तक लेके जाएंगे। कुछ नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी हम करवा देंगे, छोटे से करवा देंगे। अच्छा वो करेगा कैडेट, हमने रखा है आज उसको, इसीलिए हमारे हाथ बूढ़े हो गए अब चेक कर करके। आए माधव जी जरा। अभी कोई लड़की होती तो तुम ही चेक करते। नहीं 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 हम बिल्कुल नहीं करते हैं, उनसे दूर रहते हैं और दूर रहते हैं माधव जी हम। Yeah, can I go in or? You need to be frisk, sir. Frisk? I thought we homies. What happened? Still, protocol is protocol. Come here. Oh, you're right. अच्छा, Protocol. Hold on. First be with your lawyer. रिस्क करूं सर? करो भाई। भाई कहीं और से लेके जा रहे हैं, पिछले दरवाजे से। लो चाकू रख ले, रोड से चाकू मार दिया तो देखो रोड के पार लेके जा रहे हो। भाई समझाने जा रहा है, अभी चिट्ठी पढ़ाएगा पूरी, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। पढ़ाने दो ना, अच्छी बात पर है। यार ये जो भाई साहब है इतनी खतरनाक अंग्रेजी बोलेंगे। हाथ नीचे करके चले भाई यार सोचो इसका मैंने जब थेरेपी कैसे ली होगी वो सोच। अरे हाथ नीचे कर लो। एक्सेंट तो कभी मेरे को समझ ही में नहीं आया। माधव जी भंगड़ा क्यों करना चाहते हैं? माधव जी भंगड़ा क्यों करना चाहते हैं? नहीं हमने कहा कोई खतरा नहीं है हमसे। ऐसा किया फ्रिज के लिए ऐसा किया ऐसा। ठीक है रियो दी जेनेरियो वाला देवी का रिप्लाई कर रो प्लीज। अरे नहीं हुआ, रुको। अरे वो कुछ बचा है खाने पीने का? मील लेके आना चाहिए था शायद मेरे हिसाब से। मील सर क्या लेके आना चाहिए? मैं गया था पेनेटम पे, कोई खाई कर दे यार। हम देखो अंदर जाओगे लेफ्ट में, यहाँ पे वो लग रही होंगी मशीनें सी, वही खाओ यार हमारी तरफ। अच्छा पीने का देती है, खाने का नहीं मिलता वहाँ पे। यहाँ पे वो बोला है सिंपल स्वीट। हाँ पीने का ही है। ठीक है। प्रोफेसर हाउस द जोश लो भाई एक मिनट रखो बोले। दिल को मजबूत कर लो, फैसले की घड़ी है। ओए क्या फैसले की देखो सुनो मेरी बात, इधर माधव छोड़ेगा तो 1 मिनट इधर आएगा। बताएं मैं बोल रहा हूँ नहीं है नील सर, खाने का कुछ नहीं है, पीने का ही है बस। आजाद इसको चाहिए खाने का? क्या है मील? नहीं है, अंदर नहीं है, लेके आते हैं। तेरे को चाहिए क्या? तेरे को चाहिए क्या?
जरूरत पड़ सकती है। अगर जा नहीं सकते तो एक एक दे दीजिए, जा बस सकते पीने हैं, का जा एक। सकते हैं। मतलब अरे मतलब जब जरूरत पड़े तब मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं, जितना है तो यूज करो अच्छा पहले। ठीक, ठीक है ठीक। पीने का तो अंदर है, खाने का हाँ नहीं पीने है। का है, खाने का एक दे दीजिए। ऐड कर दीजिए। लग तो नहीं रहा। इतने सारे ऑफिसर्स क्यों हैं ऑलरेडी यहाँ पे? इतने सारे, I mean, हाँ मैं नील तुम और क्या कैडेट है सर। हाँ क्यों 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 है इतने सारे ऑफिसर्स क्योंकि ऑलरेडी? यहाँ पे गाड़ियां खड़ी थी 15-20 और लोग गुजरे थे अंदर। हाँ अच्छा अभी गाड़ी हटवाई है, पार्किंग में कॉल लगाई दे है। देते। मैंने मैसेज आप आपको डिस्कॉर्ड पेजर आप दे ड्यूटी सकते पे हो। उसको क्या उसको भेजा था मैंने आपको, पेजर भेजा था मैंने आपको। रेडियो क्या है आपने क्या आपने? बोला कोर्ट? हाँ तो मुझे लगा ऑफिसर, हाँ तो इसलिए पूछ रहा था ना मैं सर, नहीं मैं मैं इसलिए। नहीं तो पॉइंट। अरे रॉबर्ट सर के ऐसे अगेंस्ट थोड़ी कौन है, पूछते हैं। किसके साथ केस है? लास्ट टाइम मैंने जो कॉल सुनी थी कि कोर्ट केस के लिए इस रेडियो पे मूव हो जाओ, रॉबर्ट सर की कुछ तो बोला था उन्होंने, एंड आपको हैंडलिंग दी थी सिक्योरिटी के लिए। having you as नील a सर, हाँ जी corporal किसके अगेंस्ट केस है because you रॉबर्ट सर? और नहीं ये प्रमोट ट्रीबोन, हो जाएंगे कोई ना, ऊपर ट्रेबोन वाले करके है, सस्पेक्ट होंगे तो। TREY वाले जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है वो वैसा ही। हाँ एकदम फुल क्या गाना वो रहा गा देखो, रहे वो रहा हैं विंसेंट जो ऐसे। साथ खड़ा है, देखो विंसेंट जो पूरा विंसेंट जो साथ खड़ा है। हो रॉक भाई, दिख रहा है हमें। मतलब जितनी फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं, हाँ जितनी फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं ना, अच्छा कितने क्रेडिट्स है, कितने वो क्रेडिट्स? पूरा से साउथ साइड वाले होते हैं ना, जो वो सब यो वाला वो वाला है। यो एक्सेंट वाला, एक्सेंट वाला। भाई ये पूरा लोग वो तो वाला है। क्रिमिनल होते ही हैं। भाई आप भाई यार मैं जनरलाइज नहीं करूंगा इस चीज को, मैं भी शामिल हूँ माधव जी। देखते मेरे हैं को लगता है वो देखते LSC है शायद, एस वो बंदा। नंबर नहीं भाई रखा। क्या फ्लुएंटली बोलता है इंग्लिश। अब मैं तेरा अंग्रेजी का 14। सुनो डेविड सर, आते हैं चले डेविड सर हमारे जितने तुम ऑफिसर अपना चाहिए, ट्रैकर बंद कर लो डेविड फैजल। सर, अरे डेविड सर सुन ले, हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे जितनी भीड़ दिख रही है, जितने ऑफिसर रखने हैं रखें, बाकियों को बोल दे कोड बंद करने के लिए, इफ यू आर टेकिंग। हाँ बाकी मैं दो हाँ बोल कैडेट्स देंगे। रख रहा हूँ, हाँ मैं इनको रहूंगा इनको सिखा 3 दिया। और 3 ऑफिसर्स, बस बस हो गए 6 हाँ तो बस वो हो गए। नाम बता के वो कर दो ताकि बाकी लोग सिचुएशन में जाए, वरना सब ये खट रह जाएंगे अपने मुताबिक। रोबू सर, लेस्ट ऑफ बक सर, लेस्ट ऑफ बक। ट्रैकर बॉडी कैम ऑफ करना होता है ना कोर्ट में। मजे ले रहे हो ना, हम सब मजे नहीं ले रहे सर, हम आपके साथ हैं। रॉबर्ट सर ट्रैकर बॉडी कैम ऑफ कर दो ना कोर्ट। हाँ सब जो ऑफ करने का। लौट गया लोन लिया अंगद है सर कहाँ हैं भाई? कार के लिए। तो बाहर गए थे ना किसी के साथ बात करते करते, कॉल करोगे? अरे पीछे खड़ा हो तुम्हारे। हाँ आ गए अंगद सर, फैजल आ गए ये लोग। गिफ्ट तो करो पे, मेरे क्रेडिट कार्ड से नहीं हो रहा है यार, मैं सच्ची पिटी मर दूँ, दूसरी बार तो पढ़ लो। अरे मेरे कार्ड से नहीं हो रहा है, प्लीज़ सर मैं आपको भेज दूंगा। सर जी GTA 5 खेलनी है मुझे, लेकिन परचेज नहीं हो रहा। चाहे तो आप गिफ्ट कर दो, मैं आपको। भाई GT 6 आने वाली है, 5 क्यों खरीद रहा है मेरे भाई? अब ये बता तो पहले मेरे को, जब 6 आने वाली है केदार तो क्यों खरीद रहा है? वेलो खेल सकते हैं हम डिस्काउंट में, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। चाहिए तेरे को GTA अगर तो बता दो, डिस्काउंट में भी नहीं है रे, अभी महंगा है। GTA 5 GTA 6 आ जाएगा अगले साल, GTA 5 कोई भी नहीं खेलेगा, तू क्या करेगा खेल के ये बता। मैं करवा दूंगा तेरे को, ठीक है? हाँ डिस्काउंट पे आ जाओ, मैं करवा दूंगा तेरे को, ठीक है किधर? उसके बाद खरीदना है तेरे को तो मैं कर दूंगा तेरे को, मैं लेके गिफ्ट कर दूंगा तेरे को। हाँ मैं लेके गिफ्ट कर दूंगा तुझे, ठीक है? इसमें एक बार ये देख के बता दे किस पे सस्ता मिल रहा है, एपिक पे सस्ता है या स्टीम पे सस्ता है? जहाँ सस्ता है वहाँ से खरीदेंगे, ठीक है? मैं तो बोल रहा हूँ GT से रेड वो खरीद ले तू, 1000 रुपये का मिल रहा है, रेड डेड रिडेम्पशन RDR। अरे मेरे साथ आना नील सर, मेयर सर को ड्रॉप करके आते हैं। आओ, उनको ड्रॉप भी करना होता है क्या? हाँ मैं आया था। उनको ड्रॉप भी करना होता है, उनके पास तो वो है ना जम्वाल जी ड्राइवर होंगे। 345 नहीं वो उनकी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है ना, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। 35 switching to 1.6। डेविड सर अच्छा वो रॉबर्ट सर गए अंदर 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 मेरे को दिख नहीं रहे, उनसे गाड़ी की चाबी बिल्कुल लेनी है। बिल्कुल पीछे अंदर बना लेना चाबी। अरे वो ब्रीफिंग में, ब्रीफिंग में, वो ब्रीफिंग में पता है ये तुम्हें किस लिए बुलाया गया यहाँ पे? मतलब कोई ठिल जाए विल जाए उसके लिए ना, ड्यूटी के लिए? नहीं
फिर हमारे केस के साथ हमारा ही जोड़ है ना, हमको तुम्हारा तो क्या जाना जोड़े? है। ना गोली चली, ना मुक्के चले, ना थप्पड़ लगा किसी को। तो इसको मेडिकल ट्रॉमा तो है। तो किस बात का मेडिकल ट्रॉमा? मेंटल ट्रॉमा तो है, किस बात का? मेंटल हेलो, ट्रॉमा। किस बात का? हाँ सॉरी। वो अभी कोर्ट पे पता चले। भाई हेलो भाई, यस। ऐसे तो जितने जितने गिरफ्तार करते हैं हम लोगों को, सब आके नहीं तुमसे नहीं नहीं रिपोर्ट नहीं बनवाने लगे हाँ कि मैं गिरफ्तार हाँ हुआ हूँ, तो सबको तो नहीं नहीं मेंटल ट्रॉमा करार दे दोगे। वो देखो कुछ किसी का नहीं, थोड़ा बात आप एक बार अलग पेपर चीज फेंको होता बच्चा, ठीक है, है? अलग देखो, अलग अभी सिचुएशन मान लो कर जैसे सकता है। कि मान लो, नहीं, मान लो तुमने कुछ गलती नहीं करी, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ गलती नहीं करी, ठीक है? यार और तुमको इस हिसाब से था ना, मैं हर क्रिमिनल पे ही ना डेली केस करता रह जाऊंगा मेंटल ट्रॉमा का, क्योंकि गलती तो करीब मैं करता ही नहीं हूँ एज अ पीडी। फिर भी है। अब छोड़ दो, कल ही मेरे पे 4 लोग आए, मेरे को गन पॉइंट करा, पूछ रहे हैं बताओ कौन कौन ऑफिसर ड्यूटी पे है, मैं तो देखो, वर्दी में था। बात क्या है ना, सुनो सुनो, हो गया। बात सीन क्या है, देखो मैं भी अपनी वर्दी में ही ना, मैं अपने ये इसमें यूनिफॉर्म में ही 2 बार गन पॉइंट हो चुका हूँ, आगे बोल हाँ मैं तो कौन सा ट्रॉमा हो। तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा कौन दूर कर रहा है, ये बताओ तुम। हुआ ही नहीं। देखो सुनो, क्या सीन होता है कि सबकी दिमाग की हालत एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग सिचुएशन इंसान होता अलग है। अलग होते हैं, अच्छा। हाँ इंसान अलग अलग होते हैं, उनका जो लेने का कुछ थिंग्स का तरीका, जो लेने का तरीका होता है डिफरेंट होता है। तुम्हारा डिफरेंट है, तुम पीडी नहीं ऑफिसर नहीं, हो, देखो हमारा सुनो डिफरेंट है, हम सुनो ईएमएस सुनो डॉक्टर्स हैं, सुनो, वो तो लूसीफर तब भी नॉर्मल लूसीफर, हर इंसान का ना लेने का तरीका एक ही होता है। खाना इंसान कौन सी लेता है, बातें कुछ बोल रहा है। खाता है तो मुंह से ही खाता है ना, एक ही होता है तरीका। देखो यार, मेरे को जितना वो बोला गया मैं तो हाँ, उतने बोल डॉक्टरी लैंग्वेज में बोला जाए तो 2 तरीके हो सकते हैं, ड्रिप भी लगा सकते हैं, राइट? कि डिहाइड्रेशन में ड्रिप लगाओगे कि मेंटल ट्रॉमा में ड्रिप लगाओगे। मेंटल ट्रॉमा में क्या लगाते हो आप? मेंटल ट्रॉमा तो आप झटके देते होंगे बंदे को थोड़े से, नहीं? थेरेपी लेते हैं, थेरेपी थेरेपी होता है लेते उनका। हैं, उनका उनसे मतलब पूछते वो हैं आपको क्या दिक्कत है। साइकेट्रिस्ट वाली साइकाट्रिस्ट बातें हैं। टाइप है। हाँ 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 हाँ, मन हल्का करवाते हैं उनका, है या बोल सकते यार। हो ऐसे। यार ये मेंटल ट्रॉमा के लिए थोड़ा मसाज वसाज भी स्टार्ट हाँ इसके लिए बस ठीक है, जरूरत है अबे भाई। अरे वो हेल्थ बॉडी ट्रॉमा रिलैक्सेशन, होता है। अरे नहीं थोड़ा वो समझा किसी का करो ना। नीडेड होता है तो उसके लिए मैं हूँ, वैसे कोई बात नहीं। तुम मसाज देते हो दिन? अरे हाँ बिल्कुल देता है, इतनी बढ़िया देता है, फिजियोथेरेपिस्ट। तुमको क्या। कितने साल थाईलैंड में रह के आए हो तुम? दाढ़ी अभी उगाई है ना तुमने, सच सच बताना। नहीं नहीं नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कोई सीन नहीं। अरे वो एक तुम्हारे पास था ना एक हाँ स्पेशलिस्ट, वो कहाँ गया? जैकल वो हाँ छुट्टी पे हाँ, है। वो छुट्टी छुट्टी पे पे है, है। तभी तो मेरे को एक केस लेना पड़ा, और अच्छा पर मेरा केस भी नहीं था ये जोनाथन का केस था, जोनाथन का मुझे फिर कुछ इशू हो गया। मुझे क्या लग रहा है कि लूसीफर जी आज बोलो टूटोगे बोलो। आप, भाई गला उड़ती ठीक तीर रखना। मेरे पास आती है। क्या 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 हाँ, क्या? हाँ आज सही में, टूटोगे तुम। उड़ती मैं तीर मेरे मेरा पास मेरा खुद एक्सपीरियंस आती है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है जितनी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, और कभी भी कोई आया है उस कटघरे में मेडिकल डिपार्टमेंट से, तो उसके साथ नहीं अच्छा तो नहीं नहीं, नहीं हुआ है। नहीं रायन सर के साथ अच्छा हुआ था। इस रायन सर के साथ तो बड़ा अच्छा हुआ है, आपने देखा था। देखो बात यह है कि हमारा मेडिकल नॉलेज सबके सब ऐसे थोड़ी होना है। अब एक बात बताओ, तुम मेरे पास रुको, आके रो रहे हो, बाबू कह आप दो आए कि 2 मिनट। अरे कह हम दो नहीं कि रो रहे। हाँ बिल्कुल। कह दो, रुक जस्ट जा रुक जा, एग्जांपल 2 मिनट कह दो बोला, कि 2 मिनट बोला, रुक जा। अबे नहीं नहीं नहीं, सुनाई बोलो दे बोलो, रहा कह है। दो कि बता दो, हम चिप्स पूरी के करके 8 जाएंगे। पैकेट आते हैं। अरे पूरे, मैं हाँ कह रहा पूरे। हूँ, अब तुम आके मेरे सामने ऐसा कहो नील भाई कि मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मेरे बहुत को हो ज्यादा गया आ रहा है, मेंटल ट्रॉमा। ये इससे थोड़ी ही हो होता है जाता है। मेंटल ट्रॉमा। मैं नहीं इस नहीं ये नहीं थोड़ी होता है मेंटल ट्रॉमा। अब ये तुमको मतलब कुछ, वही देखो, मैं एज अ जज होता अगर, तो मेरा देखो पहला उसके भी क्वेश्चन कुछ यही होता सिम्टम्स होते कि हैं। हाँ, मैं देखो पहला क्वेश्चन मेडिकल पूछता ट्रॉमा का। कि डिफाइन मेडिकल ट्रॉमा इन टर्म्स ऑफ मेडिकल लैंग्वेज, किसे हम हाँ तो टर्म करते हैं? हाँ, वो या तो मैं तो डिफाइन कर देखो, मैं दूंगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि आ, बचपन में छोटा था जब मैं, घर वालों का डिवोर्स हो गया, माता पिता का, तो मेंटल ट्रॉमा हो गया मेरे को, है ना? जैसे कि मैं कोई था, रास्ते में कोई जा रहा था, किसी ने मुझे छेड़ा, मुझे मेंटल ट्रॉमा हो गया, बताया हरासमेंट टाइप का, समझ रहे हो ना बोला? हाँ मैं जैसे कि बताता हूँ। मेरा कोई करीबी दोस्त था, एकदम से उसका एक्सीडेंट हुआ मेरी आंखों के सामने, तो मुझसे बिल्कुल। भुलाया नहीं भूल रही बातें, ये होते ट्रॉमा, ठीक है ना? अभी अभी जैसे मैं एक केस के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है ना? पढ़ रहे। तुमने वहां पे कोई स्टेटमेंट बोली है एक्स वाई जेड, उस स्टेटमेंट के ऊपर सामने वाले बंदे ने कोई एक्शन लिया, लाइक तुमने प्रोवोक किया, ठीक है ना? सामने वाले बंदे ने एक्शन लिया, तो उस एक्शन से तुम्हें ट्रॉमा कैसे हो सकता है? बिकॉज यू आर देखो डूइंग इट विलिंगली ये फ्रॉम सुनो योर सुनो थॉट। सुनो 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 नील भाई, अब एक बात बताओ, मैं जैसे कि
पेशेंट मेरा कोई भी आता, मैं उसका बैकग्राउंड थोड़ी देखूंगा कि वो क्रिमिनल है कि क्या है। पेशेंट पेशेंट है बैकग्राउंड नहीं हमारे है, लिए। बैकग्राउंड नहीं है, पर क्या तुमने सेकंड तुम थिंग, अब मेरे को उस केस के बारे में नहीं पता है। मेरा जो ड्यूटी थी, मेरे को ये ड्यूटी करनी थी कि उसका केस मैं अपने हिसाब से देखूं और लूसीफर, उसको अच्छे से यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट, ट्रीटमेंट दे हाँ सकूं। यहाँ एक पॉइंट है। जब वो बंदा हाँ आया था तो उसने पूरी सिचुएशन बताई होगी ना, उसने कि क्यों मेंटल हाँ ट्रॉमा हुआ है बताइए उसे। उसने। हाँ उसने हाँ, बताई है, बस उसने उसने बताई होगी ना लेकिन पूरी। कुछ कुछ चीजें नहीं बताई है। अब वो उसकी जो गलती है। छुपाई वो पाई वो तो कोर्ट देखेगा, हाँ मैं थोड़ी देख रहा हूँ, तुम थोड़ी देख रहे हो। हाँ वही पे बोल हाँ, रहा हूँ, वो उसकी एज गलती होगी। तुम थोड़ी उसे जज करोगे क्या छुपा रहा है क्या बता रहा है। उसने जो बताई उसके हाँ ऊपर मैं आपने डायग्नोस किया, उसके ऊपर, हाँ बस वही है डायग्नोस्टिक, वो मेरे ऊपर था। और उसे कि क्या जो दिया उसने बताया उस हिसाब से मैं करूँ। कुछ ट्रीटमेंट, कुछ एंटी डिप्रेसेंट वगैरह कुछ दी, डिप्रेस हुआ हो कुछ हो तो। हाँ डिप्रेशन तो नहीं था, बट मेंटल ट्रॉमा जरूर था। डिप्रेशन इज लाइक वो फिर अलग चीज हो मतलब जाती है। सिर्फ वो टॉक वाला जो होता है, टॉकिंग सेशन दिया आपने हाँ साइकेट्रिस्ट वाला एडवाइसेस दिए, एडवाइसेस। एडवाइसेस दिए, ओनली एडवाइस दिया कि एडवाइसेस। ऐसे हर जगह आके ना बोले, प्रवोक ना करें लोगों को, है। मैंने तो हाँ देखो भी पर क्या मुझे बताया अभी मुझे कुछ मुझे ज्यादा। डाउट हो रहा है कि जितनी अंग्रेजी वो बोल रहा था ना बाहर, और उसके मैंने आईडी कार्ड बनाए हैं, मुझे पता है। तो उसकी तू कितने भाई ट्रॉमा वैसे समझ पाया। तेरे को ट्रॉमा हो गया वो अंग्रेजी समझ के, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा माँ है। कसम, माँ कसम मेरे भाई यार भाई, सुनो ना सुनील देखो भाई, हाँ, हाँ, सुनो एक चीज बताओ, ये हाँ। सच कह रहे हो। उसकी तो आधी चीजें मेरे को समझ आई ही नहीं। तो भाई ये ऐसे एक्सेंट में बोल रहा है जैसे कि अब मेरा मैं काम हो गया समझ ही नहीं सकता। हाँ, उसका एक्शन ही देखो अलग था देखो ना, अब मैं एक दिक्कत बात वो बता रहा हूँ है। लूसीफर, मेरा काम हो गया है। यही बात तेरे मुंह से सुननी थी, मेरे बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। मैं अबे तो आधी भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन रिपीट तो करवाया उससे। ये भी रिकॉर्ड करके जाओ ना। नहीं नहीं, ये वो कौन तो हो रिकॉर्ड गया, करे? क्लोज हो गया, वो तो हो गया, उतना 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 काफी है। मैं जंजो भाई को बोलो, मैं क्या बोलूं भाई, मैं तो कुछ मैं बोल। बोलना ही नहीं जज कुछ। जज चुप चुप जज चुप 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 जज चुप 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 चुप। तेरे पास वो है देव? ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए लगा देना। ये कोड से अच्छा है वो। हाँ, नहीं वो कोड में करेंगे। ठीक है वो तो ट्रायवन आया कि नहीं, तो मैं भी पहले वो करो ना, केस बोला स्टार्ट था। करना है। हाँ, हाँ, आ गया हम है। दोनों को मैं बोलो बोल- यहाँ पे आ जाए, स्टार्ट करना है recommendation। ऐसे रहूंगा अभी मैं। पगले ऐसे रहूंगा मैं। में कट किस बात का है? कट किस बात पे? मैं भी वही पूछ रहा था, देखो कट किस बात पे? देखो रैम सर, लगभग लग गया होगा कभी, कट देखो लोगों के गया वहां होगा, होते हैं, ऐसे इनके करता। सर पे है। देखो रैम सर, आया आया देख लेना डेविड, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। कह रहा हूँ मेरे अच्छा बॉडी कैम में रिकॉर्ड रैंसर हो अच्छे गया लग रहे है। हैं ना बाल? लूसीफर रैंसर ने ऐसे बोला रहूंगा है अभी मैं? उसे आधी अंग्रेजी समझ में नहीं आई उस ओए बंदे की। एक मिनट, हाँ रैंसर ऐसे रहूं ना अभी मैं? अच्छे लग रहे हैं ना? बस अरे शेरसा बढ़िया बोल दिया बढ़िया। मेरे को किसी ने। शेरसा सर नहीं नहीं, नहीं अलग शेरशाह के भी बाल है। अलग अलग अलग, ये प्यारे हैं, ये प्यारे वाले। ये प्यार है ना? हम बता रहे हैं ऐसे करें, ऐसे करें डेविड सर नील जैसे। नील सर ऐसे नहीं लग रहा मैं जैसे वो एक्स सेक्शन का वो हूँ, वो थोर वाला हीरो। क्या थॉर, क्या नाम है उसका? क्रिस क्रिस हेम्सवर्थ। बहस क्या हथौड़ा तुमसे वर्थ इंग्लिश में खोल तो दी नहीं जा रही, नाम कैसे ले रहे हो तुम उसका? अरे इंग्लिश में वो और ये फ्लुएंटली वो बता दे जाता है, अंग्रेजी मुझे ये अंग्रेजी बताओ, को तुमने ऑटोमेटाइज। दांतों पे क्या डायमंड क्यों लगाए हैं इतने सारे, क्या लगाया किसने? दांतों पे? किसने? मैंने अच्छा मैंने आपकी मैंने बात कहाँ हो लगा? रही है जरा। हाँ, ब्रेसेस? अरे हाँ आपके अपने पास दांत देखो, ब्रेसेस सर हैं सर आपके दांत अपने पे? दांत देखो। कुछ दिक्कत है समझे? जगमग जगमग है, जगमग जगमग। नहीं हाँ मैंने जगमग शायद वो जगमग दंत मंजन ब्रेसलेट। से ब्रश किया, चमक रहा है शायद, इसलिए आपके नजर में तो चमक डॉक्टर रहा को भी है। फ्रिस्क करना है ना, देव डॉक्टर को तो देव डिटेन करना था, डॉक्टर ऐसा नहीं सुनने में है। आया था मेरे को। नहीं उन दोनों को देव फ्रीज कर चुका था मैं। इसके 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 दांतों में चमक आ गई है हमारा हो एक्स्ट्रा। गया। अच्छा हर बार, ओके। हाँ भाई विंसेंट जी हाँ, कैसे हो? और ये दोनों कैडेट गेट पे रहना। यस सर, यस नहीं सर। अलेक्जेंडर हेलो फैजल सर कैसे हो? फैजल सर हेयर कैसा लग रहा हूँ मैं? हेयर कट चेक कराया ना, कुछ हुआ ना? क्या? ये हाँ ये 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 कह रहा है मैं मैंने थोर लग रहा हेयर हूँ। कट थोड़ा सा क्या हुआ? वो कर दिया। अच्छा सुन ना, साइड कुछ से बाल अलग करवा दिए। कुछ हाँ पीने का देना हाँ please। यार, वो ना। पीने का नहीं दे रहा मैं, खाने का भी साथ में दे रहा हूँ। थैंक यू। सर इधर आ जाए, मेरी तरफ आ जाए सर प्लीज, मेरी तरफ आ जाए। उनकी तरफ जाए, उनकी तरफ जाए। हेलो सर, मेरी तरफ आए, आवाज आ रही है? मेरी तरफ कोई आए, नहीं, इधर होवर्ड इनको इधर कर आए। दो, चक सर को कर दो आप। चक सर को कर देते हैं। चक सर आईडी कार्ड दिखाएं पहले अपना, इफ यू कैरिंग वन। All right, just a moment. All right, I'll be frisking you down, sir. I hope that's okay. आप हमें कर ले सर्च Okay, करें। sir, you can go, sir.
हाँ Alright, there's something कहाँ suspicious हाथ on लगा you, रहे हो? so I'll be going ahead and searching you, sir. श्योर हाँ यार श्योर थोड़ा कटिंग अंदर करवा आओ, ली अंदर आओ। अच्छे लग रहे हैं हाँ सर अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ थैंक यू यार जा सर फ्रीज सकते कर हो रहा हूँ आपको Alright, बिल्कुल sir, communication devices are fine. Food, sir, smokes आप please कहीं रख के आ जाएंगे, मिशन तो please. आप जा सकते हो नहीं सर स्मोक लाइटर इज ही फाइन, नहीं है लाइटर नहीं है ना, सर लाइटर लाइटर ही नहीं फिर भी है ओके यू कैन गो सर alright, then you can I'll get proceed, approval not an ये issue. जमाल सर स्मोकिंग थैंक इज यू प्रोहिबिटेड इनसाइड जस्ट से Prohibited है ये तो लाइटर नहीं है लाइटर नहीं है alright, perfect. डेविड David सर मेरा लाइक ड्यूटी से आप किसी और को साइन कर दो आई माइट हैव टू गो अर्जेंट समवेयर कोई नहीं उनको हाँ बुला तो लो जाओ शेरशाह सर एक को मिनट देना मुझे, मैं शेरशाह सर थे ना शेरशाह या फिर केविन में से किसी एक को भेज दो, जाओ मैं भेजूं टेकिंग दिस हाँ? बस जाओ, डायरेक्ट टू बाकी सारे अटैच कर लो मेरे को। मैं तो Attach. हूं सर, मैं तो बहुत ज्यादा अटैच हूँ सर आपसे। खुश हूँ। बेबो अच्छा यार हाँ हमने विटनेस आर तीनों तो यू ऑन अटैच द थे हम ड्यूटी? तीनों तो अटैच थे अटैच करिए अटैच आई एम करिए ऑन ड्यूटी No, no, are you on court duty or are you on what? Fitness list? हैं? बता दिया करो, हमको अटैच कर लो। अभी मैं जस्ट ज्वाइन मैंने अभी 41 का कॉल तक नहीं दिया है भाई अरे वो इसलिए कह रहा है कि उसने लिस्ट दे दी यहाँ से थी उठ बेबो के मैम एक हाँ एक लिस्ट दे दी थी नहीं उन्होंने एक्चुअली वो मैं हैं दूसरी जी, चीज अरे ये क्या हैंडल कर है रही थी ना डेविड इस सर, चीज में राणा सर कहाँ जज है? थोड़ी है, जज तो बाहर है। अरे वाओ What तेरे it's बाल okay, आने it's लगे वापस क्या बात है ओह वो David हमेशा sir, आते थे नहीं शेव यार, करते थे थोड़ा डेली थोड़ा क्या? डेविड सर थोड़ा सर नीचे करना अपना प्लीज क्या देख शेव के नहीं किया, खुशी हो उन्होंने गई भाई शेव नहीं किया। एक बार देख लेना और मैं पीडीएफ कहाँ वीडियो में फॉरवर्ड जा कर रहा है? दूंगा बढ़िया कि नए चार्जेस कल आए तक ये हैं डिस्काउंट है कल तक ये डिस्काउंट है लव इट जी। अच्छा मैं बताता हूँ तेरे को देख के ठीक है कैसे हो अरे हमारा कैप्टन कैसा हो good to see रॉबर्ट you after a long time रॉबर्ट सर मैं तो बोलेगी कल ठीक है भी नारे आया था लगेगी पीडी के पास बट अच्छा तब हम मिले नहीं कोई बात अपनी नई गाड़ी अभी नहीं जीतने के बाद रॉबर्ट सर के वैसे आपकी गाड़ी वो रेड कलर की है जहाँ तक मुझे पता है उसके दोनों दरवाजे गायब है आई थिंक यू शुड गेट इट नहीं तभी तो बोल रहा कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात ही नहीं आएगी हाँ कर देता हूँ अगर जीतते हैं तो बोलेगी वो जो कि नेक्स्ट जैसा मैंने पढ़ा और सिचुएशन को देखा मेरे को लगता नहीं है कुछ हो पाएगा। कोई नहीं नील भाई नील ईस्ट हाँ जी बोलिए ईस्ट और वेस्ट हाँ जी रॉबर्ट बोलिए सर इज द बेस्ट ऐसा बोल रहा है ठीक है क्यों जीतने बोलना में पड़े सर जीतने में मोटिवेशन नहीं देंगे नहीं नहीं हम तो ये नहीं करेंगे कोर्ट की सॉरी अरे अभी नहीं नहीं अगर हम करेंगे तो सर कल को क्रिमिनल जीतेंगे वो हमारे अरे मुंह पे करेंगे अभी फिर हमें बहुत बुरा नहीं, लगेगा सुनो तो यार, तुम पूरा- पहले खत्म होने के बाद यहाँ नहीं कोर्ट में नहीं बाहर हाँ बाहर तो कोर्ट फिर के बच बाद कर देंगे हाँ बाहर तो बच कर देंगे कैसे हैं? विंसेंजो हाँ ईस्ट और वेस्ट कुछ तो बहुत होंगे आज तो मिशन से विंसन जो आज खाता खुला इज द मस्ट। खाता खुलेगा देखो विंसेंजो आई होप हाँ whatever you do हाँ भाई should fail. I don't हैं? want my जीते गेम 1000-1200 don't रुपए की want होगी Robert sir to हाँ, get dehearted. वो कोई हर दिक्कत जगह नहीं है, जॉब आपके- खोज रहे हैं आज आपके फेवरेट ऑफिसर को बचाने के लिए खुद डे आए हैं, तो मुझे डर उनकी लग काबिलियत रहा पे है शक नहीं है। नहीं अच्छा, फिर अच्छा। डरते तो हम यार मैं भी सोच रहा हूँ है तो इससे नहीं, हो हाँ, सकते जज से हो। भी नहीं है। 1100 के जज से भी नहीं डरते हाँ, बस बताएं जज को ये बात उस दिन बता अनोखा दे, ने बता दे। बोली कम थी हो गया हम दोनों का गोल बेचारा मजाक गायब कर हो रहे गया हो। था सर अरे कोई नहीं यार, जज से डरना क्यों है? देखो जज डरने की चीज है, आप बताओ। जब तक हम नहीं, सच के साथ है डरने की जरूरत है हमें। नहीं 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 भैया भाई आ जाए। तुमने गिल्टी माइंड्स करके एक शो है देखा है कभी प्राइम वीडियोस पे तुमने नहीं नहीं, हाँ सजेशन देना। हाँ देखा है देखा है। हाँ वो तो विंसेंजो, पहले देखा था भाई यहाँ तो पूरी पीढ़ी यहीं आ गई हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अपना कोई बात काम नहीं, किया है सर। भाई। नहीं आपने काम अभी मैं उनका डिसीजन तो ओवरराइड कर नहीं सकता। क्या बोल दिया उन्होंने रॉबर्ट क्या बोला राणा सर ने रॉबर्ट यहाँ नहीं, रहने दो। राणा सर ने राणा क्या सर बोल ने दिया? बोला है लेफ्टिनेंट की वो काम देखना। कैसी लग रही है हमको भी देखना। ऐसी मारे जा मतलब और रही है। पीछे 2-3 और पीछे 2-3 और है ना सुनो मेरी बात हाँ। अगर कोर्ट केस ये नहीं जीतते हारेंगे, हैं ये नहीं हारेंगे। बाहर जाके नारे मारेंगे ठीक है ईस्ट और वेस्ट रॉबर्ट इज द वेस्ट हाँ नहीं तो उसके सर पे नारियल मार देंगे ये के लिए मारना आप। मैं हाँ, केस पर- करूंगा कि मेरा सरनेम क्यों यूज किया जा रहा है इस नारे में
ये डेविड सर ये कह रहा है कि ईस्ट और वेस्ट, रॉबर्ट इज वेस्ट। मैं कहा हमारा सरनेम क्यों यूज हो रहा है इस चीज में, हम केस करेंगे इसके लिए। हेलो क्यूटी, विंसेंट हेडेक ज्यादा हो रहा है। ओए क्यूटी जी मेडिटेट कर रही हैं तो समझ रहा होगा। अरे वो मेडिटेट कर रहे हैं। बुला क्या ना डॉक्टर को अंदर बुला। अरे वो करने गई हैं कुछ। मैं बोल रहा हूँ कब से। क्या बोल रहा तू? मेरी क्यूटी तो सर चॉइस Is this how you keep your वैसे duties? तुम्हारी क्लाइंट का क्या नाम है? सर चॉइस बोल रहा। चलो छोटे बोल रहा तुम मत बुलाओ। क्या नाम? मेरी मर्जी, मैं बुलाऊंगा। उसको प्रॉब्लम नहीं तो तू है कौन यार? ओ हेलो, जॉब नहीं मिलेगी, फोन अंदर रख। हर बंदा फोन लेके घूम जाता है ऐसे, जॉब मिली भाग जाओ आगे लोकेशन। रख अंदर फोन। आजकल लोग ना फोन में जा भाई, घर जाके अपार्टमेंट में सोते हैं, रील स्वाइप करते रहते हैं, यहाँ बैठ के जॉब भाई कहीं तो फोन छोड़ दो। यही होता है सर यहाँ फोन, रात में अपार्टमेंट में फोन। डेडिकेशन ले आप राना सर से, डेविड सर क्या कर रहे हैं? नहीं भाई नील सर, लूसीफर सर को बुला सकते हो क्या? ये वो अंग्रेज है ट्रेवन, वही ना? वही है। हाँ। इसको किसने गाँव मार दिया पीढ़ी से? ब्लैक सर, हाँ बोलो। क्यों? लूसीफर को बुलाओ ना। भारी है। कौन है आज का जज कौन है? बेंजामिन कूपर। चलो हटो, मैं जा रहा हूँ 42। मैं जा रहा हूँ। नहीं सुना मैंने, कौन है ये बेंजामिन? देखेंगे। इतने उत्ते हो जाओ ना मेरे भाई। किधर रह गए, शुरू ही नहीं कर रहे हैं। अरे साउंड कर रहा है। हाँ सर, एक बार वो डेविड सर से पूछ लेना, उन्होंने शायद कुछ नाम दिए थे यहाँ कोर्ट के लिए। उन्होंने बुलाया है हमको। केविन जा रहा है ना? No worries, don't get nervous. मैं तो कोड देखूंगा। Truth is with us. अरे मतलब वो ड्यूटी पे, अच्छा ड्यूटी नहीं दे रहे हो तो 10-7 मत जाओ, 42 चले जाओ फिर, ये कह रहे हो। 10-7 हो। शेरशाह 10-7 हो। हाँ क्या हुआ? ऑफ ड्यूटी जो क्या हो जाओ, मतलब कोर्ट केस देखने ऑफ ड्यूटी होना पड़ेगा ऐसा? अगर ड्यूटी नहीं कर रहे हो यहाँ पे डिजाइन। Do you want food and drink? अगर कुछ प्रैक्टिकल आएगी तो मैं चला जाऊंगा। हटा पे कोर्ट वन पे यूनिट नहीं है। 10-7 का कॉल मत रहो। 10 रहो। भाई क्या हाल? बढ़िया तुम सुनो। तुम इधर कैसे? जॉब नहीं है? विटनेस यार, कौन पे रहे? मेरे स्टेटमेंट हाँ या ना में बताओ, ठीक है? ट्रू और फॉल्स? हो गया बैक 1 या 0 बाइनरी में बात करते हैं, ठीक है? आई विल बी देयर, लेकिन मीटिंग में रहते हैं, हर बंदा ऐसे ही फोन में, रात में अपार्टमेंट में जाते हैं, रील स्वाइप करते बैठते हैं, कहीं तो फोन छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। सही बात है, मैं नहीं करता यार वो सब। तुमको तो नहीं देखा मैंने, जिसको भी देखो फोन। मेरी इंग्लिश बहुत सेट है। Hey Trevon. Hello sir. Hi, I'm Pankaj Rathod, the assistant district ये वो attorney. अंग्रेज है ना? वही ना? I will हाँ be वही। defending the police इसका नाम? department. कैसे है चक जी? ट्रेवन ट्रेवियन। Perfect. बढ़िया आप बताओ यार नील भाई। Stand बढ़िया। oath. क्या हुआ? ऐसा लग रहा है Is you your are friend? upset with something, क्या हो? Yeah, he's my friend, he's my friend. Are you upset I with swear, something? whatever I say will Oh be me? the truth, nothing but नहीं मैं तो इतना कुछ सीरियस क्यों हो फिर? I think so serious. this is Chuck's he's happy acting face. different यार, like Trevion is acting different. That's why. Can you repeat it? एडबे वो प्लीज। I swear, whatever I say will be the truth, nothing but the truth. और शेर साहब कह Yeah, रहा I है swear देखो अंदर घुसे। what I say is the truth and nothing but the truth. Yes, perfect. Thank you. Okay. नहीं, तेरे बिरादर तो वहाँ बैठा है, जाना बात कर। Mike, हाय बोल के। क्या? Mike इधर आओ। डेविड को बोल। हाँ जी। डेविड का बिरादर वहाँ बैठा है, देख चल। देख भाई शायद फट जाऊंगा मैं, देख रहा भाई मैं नहीं हूँ भाई, मेरे को कुछ पता नहीं है किसको हो रहा है, बोल दो ना। राणा सर क्या खा गए डिनर में? क्या खा गए डिनर में यार? शवरमा। लग रहा एनर्जी ज्यादा लग रही है आपको थोड़ी। भाई बोलूं क्यों? क्यों? आज शटर बंद है ना, शटर बंद है तो हम ऐसे ही रहते हैं। अरे
सफेदी है मतलब जिंदगी में आज। है कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? जेन्युइन जेन्युइन टोटली ऐसे खड़े जेन्युइन। रहना सब। बच के राकल में स्पिरिट से। दाढ़ी काट दूंगा तेरी, चुप हो जा। तू दाढ़ी काट पाएगा, मैं तेरा काट दूंगा। कॉमेडी हा 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 हा। आगे कहाँ पे? नसे अरे सर माइक से बात पूछो करो। भाई। हेलो सर, इनवाइट मैं दे दूंगा, ठीक है, बाकी इसको हैंडल कर ले। ठीक है भाई। बिजी जानो। अरे अभी चले जाओ ना, अभी दे देते हैं चल के। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बैठिए अरे Is तो everyone present in the courtroom? Angad is coming. Okay, let's wait for Angad then. I hope I'm audible till behind. Yes sir. Yes sir. EMS guys, you can hear me? Yes sir. Yes. Can the EMS guys hear me? Hello? Yes sir. Yes sir. We hear you. If you can hear me, clap. The guys in the ए back. भाई ताली बजाओ। बस अरे चलो ना, अभी दे देते हैं। मेरे को तो मैं अभी नहीं, पागल है दे ऐसे इसलिए में नहीं जाना होता। दे बात मानना, मैं बोल रहा हूँ। पेपर बता। आप उसके मुंह में क्या कर रहे हो बैठ के? 167 अभी नहीं देना होता पेपर बताए भाई। तू दे भाई। पेपर इज दे दिया मैंने। 39। क्या लेन देन की बात है? बहुत जल्दी दे दिया। लो इसमें दो 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 तीन तीन अंदर बैठे थे। पहले दे देता हूँ। थोड़ा उधर हो। Judge, everyone is like present now. Alright. Can you please begin with the opening statement? बॉइलिंग का चांस मतलब हाथापाई होनी चाहिए। ये जरूर उसको आप सब लोग भी बैठ जाइए पीछे। खड़े बन जाइए। Before we begin, can I request? Faisal, I think had a head pop, so could we just wait for 5 minutes around? He's a witness, right? तो ठीक है सर, okay, sorry. एटके सर आपका आवाज पीछे तक नहीं आ रही है। तो प्लीज पुट देयर फोन ऑन। आ रही है ठीक है क्या? मैं देख लेता हूँ। आ रही है। ओके सो योर ऑनर शुड आई बिगिन? सर Yeah. Ladies and gentlemen of the court, today we gather here to address a fundamental pillar of our democracy, the right to free. Enriched in the First Amendment Constitution, the case before us revolves around an incident where my client dared to express his opinion in a crowded place, only to find himself silenced by the very hand tasked to uphold our liberties. In the great tradition of our nation, the exchange of ideas, even controversial one, lies at the heart of our democracy. We will demonstrate that that statement of my client was made indeed an opinion, a personal judgment grounded in the beliefs rather than any malicious falsehood. As such, it falls fairly within the protection of First Amendment. Today, we ask for a ruling that upholds. Good evening, everyone. Honorable prosecution mentioned some very, very important points about the First Amendment and free speech mentioned in our Constitution. Before I go towards those, I will break down the charges levied by the prosecution over the defendants, that is the police department. The first charge they have said is wrongful prosecution. Honorable Judge, by definition, prosecution in criminal law is to initiate criminal proceedings against a person. Such actions are initiated by a prosecuting attorney, example, Mr. DA sitting over here, or an assistant district attorney, or any federal attorney representing a state. In this case, no such prosecution has taken place. In fact,
there is no arrest booked in our systems. There was no jail time. There were no charges levied. The only thing which had happened was a warning extending to a detention. The second thing which has been stated is violation of the First Amendment. Clearly, I hope that there was no breach of, free speech, because there are certain exceptions to the First Amendment. First is speech is prohibited when it causes the breach of peace and can lead to violence. In this case, Mr. Trevon was found to be overly aggressive in the situation. Moving on, there were use of illegal words, fighting words. So one thing also you would like for this case to establish during these proceedings is to add exceptions in the First Amendment to speech which advocates illegal action, leads to violence, commercial speech at a public place, and obscenity. Moving on, the third charge levied over here is that of defamation. Again, there is no tangible evidence which has been shared by the prosecution which says there are damages to the client, to their client, or to prove defamation there needs to be a false statement, which has not been the case. Over the proceedings, we will establish that the police department did not do anything wrong, and all of the above charges levied upon the police department are just to gain fame in the city. Thank you. Your Honor, I would like to call my first witness, which is Mr. Trevon James. Sure, Trevon, you can proceed to the left. Stand up. To my left, my left. Mr. Trevon, please turn on your mic from there. Hello? Yeah, we can hear you. Oh, okay. Can you take him under oath, Vincenzo? Okay, Trevon, repeat after me. Yes. I, your name. I, Trayvon James, Swears on the city's constitution swears on the city constitution that I will speak truth. That I will speak truth. Your voice. Can you please repeat? I will speak on your truth. That I will speak truth. And nothing beside truth. And nothing besides the truth. Okay. Okay, so Mr. James, can you read account of the incident? Yes, I can. What pretty much happened was I was at the city hall and I stated my opinion against the Captain Robert Wilson, and I told him that I feel like he was siding with Mr. Tackrat in this case, and that in my opinion he was a corrupt cop. Okay, so before you made this opinion, was there any incident which led you to be on this opinion? Yes. Can you please explain that in detail? Yes, what happened was I was assaulted by Mr. Tackrat, and I went to the officer for that. I believe that was Officer Faisal at the time, and I explained my situation. And apparently Mr. Tackrat went also to another officer, in this case Robert Wilson, and told that I assaulted him. Well, in that case, the officer didn't really know what to do, I guess, or he gave us both a verbal warning. He said, "Do not do it again."
I replied, okay. And I told him that if Mr. Tackwood does such thing ever again, that I will take him to court for that. And then he got up into my face with all the officers standing around us and said, yeah, I will show you, man. I will show you, in a very threatening manner. And the cop didn't really respond to that or did anything about it. Well, I told him earlier that I feel very uncomfortable if he comes really close to me. And which he did. So, and that's what happened. And that's why I gave my opinion regarding that. That I felt that he was siding with Mr. Tackwood as he let Mr. Tackwood go. He didn't tell him anything. And he was not worrying about him. He didn't say, come close to Mr. Traven James. That's the case. Okay, did you feel that Officer Robert Wilson adequately addressed your concern and took appropriate action regarding your report? Which you reported. Did you say Faisal? No, Officer Robert. Officer Robert? No, I felt like he was really siding with Mr. Tackwood. And the reason for that was he was very attacking towards me instead of being in the middle. I felt like he was choosing a side. And why I explained that to him, that I felt like he was choosing a side, he said, you can file a report against me if you would like. And then I said, okay, so who's the highest in rank? Like, who's your chief? And then he showed me his badge, which said Captain Robert Wilson. And he said, I'm the highest in charge. So I told him, so how am I going to file a charge against you if you're the highest? And then I said, in my opinion, you're a corrupt cop. So that was the leading up towards it, the reason. Okay. Did any point of time Mr. Robert asked you to file an FIR against him, against Mr. Robert? Yes. Objection, my lord. What's the objection? Prejudicial. Sustain. Okay, so what transpired between you and Officer Robert Wilson led him arresting you for the charge disrespecting peace officers? Yeah, so leading up to it, when he said you can file a report against me, and he said he was the highest in charge, and I told him, how can I report something if you're the highest in charge? In my opinion, you're a corrupt cop. He said, okay. And then he arrested me and put me in handcuffs for disrespecting a peaceful officer. And I told him that's my opinion and I can state my opinion. Are you arresting me for my opinion? And he said, yes. Go do a court case. And then he let me to the car and put me in the back seat of the car in cuffs. And he read my laws, my Miranda rights. Okay, after But he clearly said, I clearly asked him, are you detaining or arresting me? And he clearly said, I'm arresting you. And then he put me in the car and read me my Miranda rights. Okay. After all, when you were in car, one of your friend came to you. Can you tell who was he? Yes, that was Mr. Chuck Capone. Yes. So what did he ask you? He pretty much asked me what happened, and then the cop came in between, and they went aside, and they had a long conversation. I've been sitting there for a good 20 minutes in the back seat of the car, handcuffed, not knowing what was going on. And Okay. yeah. Yeah. So when your friend had a conversation with Mr. Robert, did your friend came to you in between and asked you something? To do anything? Can you repeat that? While you were handcuffed and sitting in the car, Yes. and your friends were having conversation with Mr. Robert, did Yes. they came in between and asked you for something? Yes, they pretty much returned and asked me. What's the objection? Here's a conversation between two people without any substantial evidence. No, I'm asking. What? Do you have the proof of it? The conversation that happened? Yes, Mr. Chugg is here to testify him. So that is the conversation that happened between Mr. Chugg and No, I'm your asking client, Mr. right? James. I'm asking Mr. James what happened, like what conversation Mr. Chugg and Mr. Trevon have after after Chugg has consulted the cops. Exactly. So that is a conversation between two people for which I need proof.
Until and until then it will be considered as hearsay. Okay, Because so yeah. There were actually 2 people there. So then are those people present on the witness list? Yes, it was Athena Yes. and Chuck Capone that were there. They both Okay, are present so here. then you need to bring those guys, and those guys need to provide. Okay. Okay. Wait, Ravan, wait. Oh, okay. Yeah. Yeah. Sure. Okay, I will ask another question. No worries. Did any time your friend or officer asked you to apologize, Mr. Robert? Yes. Mr. Chuck returned to the car with the cop, and he asked me, all the cop wants is an apology from you. And I told him I did do nothing wrong. I don't have to apologize. I stated my opinion. And Mr. Capone told me then at that moment that he felt hurt about the fact that I called him a corrupt cop. Then I said, okay, I don't really care about his feelings because I'm just stating my opinion. And he's heard about that and he has to follow the law. And the law says that I have freedom of speech and I'm willing to express that. And then he sat in the back and he said, yeah, I'm just trying to do my job. And I don't know why he's saying that to me. In this case, that was Captain Robert Wilson. Okay, you know why he left you and like why did he get you freed afterwards? I actually don't know. He just walked up to the car. He didn't say much. And he let me out of the car and he uncuffed me. And he really didn't say why he Do you uncuffed feel he me. realized But that he was doing a mistake? Sorry? No, he didn't say it was a mistake, nothing. Before he said, I'm clearly arrested for disrespecting a peaceful officer. And he put me in handcuffs. He read my Miranda rights. And then 20 minutes later, he comes back to the car, puts me out of the car, and uncuffs me. So he never stated why he did that or why he let me go. It was really weird for me to experience that. Okay. I have few small questions left. So can you tell us a bit about your background and what kind of linguistics do you use, like from the place where you come from? Yeah, so I was born in New York. I was born in the Bronx. And there we have a lot of slangs. For example, we say a bitch ass a lot. That's a known slang. We say 5-0 coppers. We have a lot of words where we come from, which is pretty normal in the U.S. in the New York. And that's why I speak the way I speak, because I was born with that slang, and I learned that slang, and that's why I express my feelings within that slang of New York Bronx. Do you use slang only to disrespect anyone, or you use it No, it's no, a no, habitual no. thing? Yeah, it's a habit. It's not about disrespect. Not at all. Yeah. Okay. So after this incident, I got to know you have went to a doctor as well. Can That's you right. That's right. tell something about that? Well, after this incident, I felt really emotionally hurt about what happened, about the fact that I was unlawfully arrested and put in handcuffs and put in the backseat of a car for 20 minutes and then let go without any explanation. And I felt very powerless because I feel like as a human, I have the right to express my feelings and use the first right of amendment. And I feel like that was violated at that moment. And so I went to the doctor. And the reason for that is that my people were shouting at me a lot, telling me I'm a criminal for the fact that I was put in a police car. And it seems like my reputation just got really bad hurt, which led me in depression. Very heavy Also, depression. objection. What's your objection? Sir, there were foundation issues in the statement made by Trevon James right now. He said 20 minutes, wherein the petition submitted by the prosecution says 15 minutes. So, sir, that's lack of foundation. And can you be a bit louder, Amrit? Sir, during the statement, Trevon James just mentioned that he was detained for 20 minutes, but the prosecution's petition says 15 minutes, so it's lack of foundation.
The prosecution said how many minutes? 15 minutes in the petition. Can I see that petition? Is it there on the same place? Yes, sir. It's the petition Yes. they submitted to the court. Yes. Let me take a look at it and then I'll tell you. Sure. Just give me 1 second. नील से कुछ खाने पीने का है क्या? Let me check, sir. मेरे से सर रुको मैंने मंगा लिया था रुको 186 186 अरे मैंने मंगा लिया था मैं दे रहा हूँ ये लो सर पेवाल बताओ 186 हाँ थोड़ा हिल लो विराज इधर आओ लाइक जस्ट मूव विराज बोल टेस्टिमनी इज नेवर अ हियरसे कोई टेस्टिमनी के लिए बोल रहा है कि इट्स हियरसे तो इट्स नॉट वैलिड कैसा लाइट है? एक तो सबर नहीं है। Objection is sustained. क्या Thank you, sir. Okay, can you tell about your incident, like your incident with the doctors? My incident with the doctors. Yeah. Well, when I arrived, I was very emotional about what happened, and right now I'm in therapy, and I've been going to therapy sessions to clear and help my mental state for the incident that happened at the courthouse or city hall. Excuse me. Okay, so you are done with your therapies and all, or there are still some things No, left? I'm still doing therapy. It's not finished Sure. yet. Okay. I actually have a session today. Okay, no. Your Honor, that's all question from my side for now. I would like to request re-examination after the prosecution, after the defense is done. Sure. Good evening, Mr. Trevon. Good evening. Firstly, I would like to ask you that are you mentally fit right now? Is everything okay? Are you good to be here? Because I don't want this to be traumatizing for you. I was clear to be on stands. Are you cleared? Perfect. But you're feeling okay, right? I'm feeling okay enough to be here and stand throw, yes. Perfect. So, earlier when Mr. Vincenzo was asking you questions, they mentioned a few slangs. What were they? Can you just repeat for my knowledge? Yes. Like I said, I was from New York, the Bronx, and we use slangs such as bitch ass over there and other slangs that we use in the normal daily life that is not always disrespectful or always used in a disrespectful manner. We also use slangs in a normal manner. Okay. Now I want to ask you that did you use any of these slangs for Mr. Robert? I called him a corrupt cop, yes. Apart from any prefix to that? Yes, I called him a bitch ass corrupt cop, yes. Okay. So if the judge decides to rule against you today, would you call him any of those slangs? If he rules against me today, then what? Would you use any of those slangs for him? As I said, I use Objection, slangs. opinion. That's not. He's not asking for. He's asking for Trevor's opinion. He's not giving his opinion. Overruled. As I said, I use those slangs in a normal manner. Okay, point to be noted, Judge, that he used, and he didn't call Robert just a corrupt officer, he used the words bitch ass corrupt officer. Moving forward, Trevor, when Robert met you outside the city hall, did he first give you a warning or he was hostile with you from the start? To my feeling, he was hostile at the start. Did he give you a warning first, is my question. Yes, he gave me and the Tucker the warning, yes. Okay. Could you also elaborate on the scuffle you had with Mr. Thakur?
Yes, Mr. Tarkert really wanted my vote, and I didn't want to give him that vote, and he became very hostile towards me because of that, and he pushed me 2 times because I didn't want to give my vote. I was voting for Gilu at that time, and he wasn't satisfied with that because I met him a couple days earlier, and he said, "You are my friend, and now you're voting for the enemy," and yeah. He just became hostile for the fact that I so-called switched on him, as we should say. After this, did you go to the police department and launch a FIR against Mr. Thakur? No, I went to Faisal when were you asking me about the scuff or about the fact that No, after this incident, did you go to the police department and lodge a formal FIR against Mr. Thakur? no, I went to my lawyer. Did you and your lawyer then go file a FIR? Not that I'm aware of. Okay. Okay, moving on. You've also filed for defamation over here. There was an exhibit submitted from LS Customs to us earlier this evening. I wanted to know, did you go to the police department through your lawyer to get an NOC? If I went to the police station to get an NOC, Through your lawyer. Did you, through your lawyer, go to the police station to get an NOC? no. Okay. When you went for a job at LS Customs, did you, what conversation did you have with Miss Sarah? Yes, I asked her if I was able to work there, that I have some mechanic skills that I learned back in New York, because I used to fix cars. And she told me I don't want such a criminal here in my company. And she didn't really give me a chance or anything like that. She didn't really ask much. She knew I was Trayvon James. And she right away told me that she doesn't want such a criminal in her company. इनका आवाज कम आ रहा थोड़ा ये It just hurts. Okay, Judge, I would like to point out over here that Mr. Trayvon James is blatantly lying in this court. We have submitted evidence, a testimony from Ms. Zara Hayat, with front of the prosecution lawyer as well, where Mr. Prosecution lawyer had asked Ms. Zara what had happened, and she's clearly stated that Trayvon James had come to her for a job, where he stated that he has a problem with the PD, and Ms. Zara's response was that till you solve that problem with the PD, she wouldn't be able to give him a job, and if he got an Objection, Your NOC, Honor. what? Miss Sarah didn't said anything about a problem. She said that there was an incident with We of have Mr. her testimony. Testimony Yeah, has been we submitted, have sir. her testimony. In the Can you play it testimony, right she's here in the court? sure. Yeah, let's play it. Can you play it? You're recording. Yeah, it's submitted. It's been submitted. It's submitted. I can see. Actually, we like. in section. I I just wanted guess to we be played can. right now. Yeah, we can play, but like I don't think so. We can play videos on those. We can only play like images. We can't do Atticus. We can't do videos. ये वाला I'll give अगर it a ये try. नहीं अगर ये छोटा चेतन वाला स्क्रीन है तो नहीं प्ले कर पाओगे नहीं छोटा चेतन वाला नहीं है शायद से। नहीं सर वो वाला छोटा चेतन पीडी वाला Also Vincent, तो साहब यार ऑब्जेक्शन के टाइम पे बता दिया करो कौन सा ऑब्जेक्शन है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं आप ऑब्जेक्शन के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं, थोड़ा बता दिया करो कौन सा ऑब्जेक्शन है। Speculation is a real suspicion. She was the guy. Respond to it. There was a red and white color Sylvia. अब मेरे को जाना पड़ेगा भाई, कितना बज रहा है, इतनी गालियां आ रही है ना, इतनी गाली। सब मरवाएगा।
बस याद दे दियो वो It's not working. No, there's वो some दे like videos. He doesn't support videos. वो दे We should have a one with videos as well, something similar to the PDP. We'll order it. है ना? Yeah, let's order. Okay, for now then, can you give me the exact timestamp of the deposition when Give me a discretion has been moment. answered? So sorry. Sir, 40 seconds onwards. 40 seconds onwards. Sir. I know you're very competitive, but no matter how much you hate Vincenzo, No, I don't hate him, sir. Sorry. Extremely apologize. It's fine. Have you sent it to me? Sir, 40 seconds onwards. In the evidence. बात कर लेना Let's take a look at it. बेचारा परसों भी उठ गया था फिर उठेगा जब मैं कोडास में आती हूँ थोड़ी देर में। क्या चल रहा है? एयरप्लेन मोड कर दो। घोड़े चलने के बाद आपको आ रही है, मेरे को आ रही है कुछ। क्या कह रहे हैं अंगद सर? अच्छा क्या कह रहे हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा कर रहा हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। ये जो घोड़े चलने की आवाज आ रही है अजीब सी, आपको भी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। जी मेरे साहब। राणा सर क्या कुछ होगा मेरे साथ? सुन नीले जरा आते वक्त टाइम लगा। ये सुन ना, पैसे इधर पे गाड़ी के मैंने निको को दिए, गाड़ी खरीदनी है तो। कितने हैं अभी? नहीं है मेरे को, 30,000 दिए मैंने उसको, 30 थे मेरे पे। मैंने खुद गाड़ी खरीद ली है। यार थोड़े भी नहीं है अभी ड्यूटी के जितने मिलेंगे 10-15 हज़ार में, क्योंकि जो अभी देख पैसे भी बढ़ोंगे। देख सबसे बड़ा वाला लिया है। मैं 1 महीने में कोशिश करूंगा सब निकाल लूं। हाँ समझ रहा हूँ। अभी हाँ, अभी एलेक्स पे हूँ, एलेक्स से ले लो। Your Honor, I would like मेरे to पे अभी वहाँ request पे a नहीं है। sidebar once. कौन है एलेक्स एलेक्स? पे हूँ, अलेक्जेंडर। अजीज अंदर से भेज The testimony that has been showcased of Zaraya that says otherwise of what Trevor हाँ। has mentioned in the court. बार-बार एक बंदा आ रहा है। Can I have a sidebar 1 से 2 बंदे आ रहे हैं, गाड़ी चुराने के लिए ट्राई करते हैं। with you and अरे साइडबार क्या होता है? होने में जाती सारे मिलके क्या पिएंगे? नहीं जब जज और दोनों लॉयर आपस में बात करते हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता खड़े रहो। Can you tell me the timestamp? साइडबार का मेरे को मतलब भी पीना सुनना है थोड़ी भाई। होता है। साइड में जाके वो पीना सुनने मतलब के लिए साइडबार। क्या चल रहा है? अपने को इतना समझ भाई नहीं ने आ रहा। आपस में ही करना, तो हम क्यों आए हैं? बात तो सही। अरे ऐसा ही होता है माधव भाई साइड बार है My question is, if you would have just gotten an NOC, you wouldn't have क्लिप got डाल a, देना you would have got a job.
he is the one who mentioned to her that he has अब मेरे को तो सुनाई दे रहा, मैं कान बंद कर instead लूं। of she mentioning it. नहीं नहीं सुन सकते हो, ऐसा Over कुछ here, नहीं है। Trevon said he has mentioned, like she told him upfront अंगद को that वो ऐसे भी सुनाई दे। So I mean, it's a hypothetical situation. She's saying yes to, right? सर आपके बैठे मेरा ट्रेनिंग खत्म I'll नहीं करना I Vincenzo? want to continue this in the case. ओए रॉबर्ट यार मुझे मन हो रहा है ये कूद के मैं चला जाऊं, इतना आ कर रहे हैं ये तो। No, that's not gonna happen. She is not. She didn't say anything else. What she said in the भाग first रहा है भाई ये। aspect, she said stayed true to it. She just said that if अरे you guys I would needed not my have cross। known that, वो तो if I would have अंगद का received गुडलक है, the मैंने EOC, सुबह then रिजाइन I कर would दिया। have probably hired him. Right? So it's सीढ़ी के completely दबाव से। hypothetical situation. दबाव से नहीं, Go ahead. Go ahead. जो आपका प्रॉब्लम था ना वही मेरा भी प्रॉब्लम था, समझ गए? Yeah. यही बोलता Are you हूँ, sure? आ गया फिर से मुंह उठा But के। she is not going to वही turn hostile because अनवांटेड हेट होने लगे कि the objection that you पर्सनालिटी made कुछ and थोड़ी so तो उससे बेटर। yeah. But she's not on the recorded. Vincenzo, yeah, the thing is, if कौन बोला ये? hostile, then whatever Trevor is speaking about the LS, then how We won't. Yeah. it would become yes, right? इसका को काउंसिल चला गया, मैं चला गया। अरे यार You don't want to consider it? Sir, it is my हमको evidence. हमको क्यों पकड़ रहे हो? It is my हमको बोल भी evidence. ठीक How can कुछ he हमारे not? लिए गांड फटी पड़ी है अभी टेस्टिमनी देने टाइम जो भी होता है। कितना फटी It's है my देख। deposition. देखो देखो No, no, she देखो is not on He it. deposed her, right? I deposed her. यार Deposition is not necessarily skeptical self के सामने देने testimony अलग बात होती है, that needs to be sir submitted। के सामने देने का अलग बात So you should have, before when you heard her say that, भाई you could have गवाही declared भाई her Vincenzo, hostile. her testimony will be taken into account. She should have been declared hostile before the case started, and it was submitted before the case as a part of discovery. Just because now it is not going in your favor, you can't just turn her hostile. To turn her hostile, you need to, just because she's your witness doesn't mean that. You need to prove that she's lying, then only you turn her hostile. मैं एफिडेविट ले आऊं हॉस्टाइल का भी मांग के। Who's saying something else? 119 Mr. Trevon. Trevon. So he's the one who's. So do you think I आपस should? आपस Wouldn't में बातें क्यों हो that रही as hearsay then? You can. Okay, Sanjeev. you can turn her hostile, but I can still make an argument. क्या हो गया भाई जी? ठीक है? क्या खाना खाना? कुछ नहीं दिख रहा है। आपस में तो मुझे दे दो खाना। सुना पूरा केस मैं ठीक है? हाँ 64 पर। 60 देता हूँ। But why didn't you? After the death. खाने को बस खाने को। मैं जाऊं क्या? You're most invited. Please don't No, Vincenzo. You can break my trust this time. क्योंकि क्या है? I have not. भाई है यार सारे। that witness starts भाईचारे में going खाने की against क्या you. बात? सही बात। Just saying. जेन्युइन हो गया भाई, जेन्युइन हो गया। बेटा थोड़ा जगह दे। क्या हो गया? Vincenzo, I have a simple question. रहीम तो दादी जी समझ में आ रही इधर। क्या हुआ ये तो? Not happy. साइड The witness is not even here. How are you going to treat that? You need to tell me that the testimony is incorrect. You need to prove that. Then only I won't allow it in the court. फिर कंडेम कोर्ट में हम तीनों अंदर जाते हैं। That is the whole case is about. Vincenzo. बड़े बदतमीजी। Cool. Okay, no problem, sir. Thank you. तुमको इतना अच्छे से ऑफर दे Vincenzo, रहे हैं। okay, let me just make Vincenzo. Let me make one clear. For the witness to turn, you want to turn the witness into hostile. Is the witness present here? 5 तारीख को बर्थडे है, 4 तारीख को पार्टी है। Answer my question. Vincenzo, answer my question. Is the witness present here? The witness is not present here, right? So what Ms. Zara did, she gave her testimony, correct? She gave her testimony under oath. सही बता रहे, ऐसा ही बताया। She's a witness, correct? It was a deposition. मैं जस्ट एक वो अटेम्प्ट टू मर्डर कर देता किसी का। और आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी दे रहे हैं आप हैं? ऑन ड्यूटी Depositions are being taken under oath. किडनैपिंग की Correct me धमकी if I'm थे, wrong. बदतमीजी। बोला है, अरेस्ट बोला है। तो किडनैप भी बोला है, किडनैप भी बोला है, इंडायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली क्या? नहीं धीरे देखो मैं चलता हूँ। धीरे बोल। ओए बैठ।
धीरे बोल इससे ज्यादा इतना धीरे बोलने को निकलना मैं अभी चला जाऊँ तो इसकी फाड़ दूंगा तो चाहिए उसका लाइसेंस नहीं है I'll explain it to you later. अरे बहुत कल क्राई कर दिया इन लोगों ने आराम से एक दिन बाद कर लेते I'll कल tell you, कर if she लेते would have रिजाइन been here in person, कल रात को ही मैंने रिजाइन डाल दिया जज ने भी 1 सेकंड में दांत मार दी मैंने बोला चलो जज भी कह रहे थे छोड़ ही देते of the court that she's lying. Makes sense now? भाई तो सब एक ही क्यों है? Sure. Sir, can I get like a minute to get back my train of thought? I've just lost it. Let's do one thing. Let's take a recess and for 5 minutes, and then let Okay, everyone boss. have a यही drink चाहिए or a था। snack, Yes, and then let's sure. reconvene in 5 minutes. Perfect. Thank you, We reconvene exactly at 10:25. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. हुआ क्या था विंसेंटो इधर आ अरे यार अंगद भाई Don't come with me. बारो I do. क्या हो गया? कोविड भाई की आवाज 2-3 बार आई बस। अरे वो कुछ नहीं लंच 5 मिनट का ब्रेक है चाय भाई पिए चाय भाई पिए चाय वाय पिए चाय के साथ चाय के साथ नमक पारा मिलेगा क्या? कोई वाले बनाते हैं चाय नमक पारा भी उनसे बनवाया गया अच्छा चलेगा अंदर गए अपने चेंबर सुट्टा ब्रेक करते हैं या तो मट्ठी दे दो चाय। पाव भाजी देते हैं शायद पाव भाजी देते हैं हाँ, वो भी चाहिए। डेविड भाई सोच रहे भाई तुम आ जाओ न्यू एमिनेशन अच्छा चाय नाश्ता खा के आते हैं पता नहीं 5 मिनट का ब्रेक है ज़्यादा मत ज़्यादा लंबा आओ ना एक सुट्टा हो जाएगा चलो हाँ सुट्टा तो हो जाएगा आ जाओ सुट्टा मारेगा मेरे को भी चाहिए मेरे को भी दिमाग खराब हो रहा है बस समझ नहीं आ रहा क्या स्ट्रेस हो रहा है बहुत सुट्टा ही मारना वो बीड़ी मत निकालना बस मेरे सामने अभी बीड़ी नहीं पीते सिगरेट कल भाई तुम मुझे पता है तुम किस को रेफर कर रहे हो किस चीज को रेफर कर रहे हो भाई कल बंदा उठाया है 40 थी उस पे लाइटर है क्या लाइटर है गैस की आग पता नहीं कौन है बार-बार तीसरी बार आया गाड़ी चोरी करने बार-बार कोई चार्जर पे हाथ मार रहा है कौन सी गाड़ी पे चार्जर एक बार आ रहे एक बार करना कोने में फिर एक बार यहाँ कोने में छुपक के खड़ा हो जा दीवार के पीछे अरे नहीं भाई फिर रो देंगे लोग हमारा वेट कर रहे हैं अभी मेरे ये भी है बता पीपल बता 64 मेरे को भी देना बाद में से टायर पॉप कर दूंगा एक बार लाइट कर दो ये साइड बार तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं भाई मेरे को लगा साइड में जाके ऐसा अल्कोहल ये बात एलएस कस्टम पे गई उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ हाँ वही पेपर बताओ 119 मेरा कितना प्यारा पेपर है यार 143 सिगरेट I have nothing but love to offer Chakji but people still don't want to take it यार देखो इन माय ओपिनियन मैं ओपिनियन दूं अरेस्ट नहीं करोगे ना मैं नहीं करता यार मैं तो मेरे सामने कुछ भी दूंगा मैं ये कह रहा हूँ रॉबर्ट है ही मादरचोद एक मिनट बॉडी कैम तो ऑन नहीं है बॉडी कैम एक मिनट नहीं कोई भाई बता दिया करो यार ये सब बोलने से पहले ओपिनियन से पहले अब पूछा करो ना हाँ तो मैं वही नहीं वैसे उन्होंने एक इंडिविजुअल के ऊपर ओपिनियन दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कब कहां से तुम्हारी मार दी जाए तो पता नहीं चलेगा हाँ वो भी यार नहीं भाई पता नहीं ना देखो क्या हुआ था अब मेरे को कुछ ये करा था ठीक है मेरे को अरेस्ट कर दिया था बस पे इफ यू रिमेम्बर तो वहाँ पे मैंने ऐसा डाला था तो फिर मेरे को उठाने आए थे तो मैंने रॉबर्ट को बोला भाई यार तुम क्या मेरे बाप हो गया ऐसा जो तुम बोलोगे मैं कर लूंगा तो उसका थोड़ा सा वो हो गया मतलब वो भड़क गया था उस पर तो वो जब वहाँ पे गया था ना क्या कहते हैं उसको इंटेरोगेशन वहाँ पे मुझे बोलता है कि अब तो कुछ भी हो जाए तेरे को तो बेल भी नहीं दूंगा मैं डीए से एक्सेप्शन दूंगा तेरे को डीए से बात करूंगा वहाँ पे 20-25 मिनट तक डीए से बात करी फिर मेरे को बेल हो गई
हम क्या करेंगे सर, हमारे तो हाथ बंधे हैं ना, आपके खुले हैं। आपको नहीं मैं हमारे बता तो- रहा हूँ। नहीं मतलब एज अ पीडी ऑफिसर हमारे तो हाथ बंधे हैं ना, वो तो सही बात, वो तो मतलब हम चाहे किसी से कितनी पर्सनल खुंदक रख लें, चेन ऑफ कमांड नहीं तोड़ सकते ना आप सही बात है, इनका तो बेसिकली। मैडम ये ऐसे वर्ड ना सीखे, देखिए चेन ऑफ कमांड एंड ऑल, ठीक है ना, ये अरे हम हानिकारक चीजें हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थे, criminal हमने psychologist पढ़ा है ना। हाँ नहीं इसमें नहीं तो मेरे एक्चुअली साथ एक्चुअली ये चेन ऑफ कमांड जो है ये आपके क्या कहते हैं फैमिली होती है ना ये लोगों की, उनमें भी फॉलो ही होती है, हर जगह ही होती है, हमारे परिवार में भी होते हैं ना, बाप से हाँ बिना वो तो पूछ हर के। जगह होती है, हर हाँ जगह मतलब होती है। बेटा बिना बाप के पूछे कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दे तो फिर बाप काफ ले लेता है। हाँ, करेक्ट हाँ, तो वो तो हर जगह ही है, तो फिर ये तो वही बात है ना, ये तो कंपनी में बिना बॉस की मर्जी कंपनी चला सकती हायरार्की का दूसरा वर्ड है, चेन ऑफ कमांड। है। ये नौकरी पेशा लोगों ने मतलब कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, ये नौकरी पेशा लोगों ने बना दी गई है बाउंसर का कि जो टैलेंट है वो ऊपर ना आ सके, खुद से डिसीजन ना ले सके। वो तो है। इसलिए हम हमेशा से बिजनेसमैन बनना चाहते थे, इसलिए हम तो जिंदगी में। इंडिविजुअल टैलेंट में बिलीव करते हैं, अपना गाना खुद गाते हैं, खुद कभी कभी तो हम अलेक्जेंडर को बोल रहे होते हैं कि भाई रिटायरमेंट लेते हैं अर्ली और कैसीनो यार खोलते नील हैं। भाई पता है, मेरा भी केस होता, पर अल्फ्रेड पता नहीं भैंस चोद 1 वीक तक कहाँ मरवा रहा था। क्या केस वेस करके और क्या तुम मिला? तो विंचेंजो को अरे लोगे तुमको तो नहीं पता है, अपने अरे लिए नील भाई फाइट तुम तो करने थे को। ही। विंसेंजो को तो मैंने पहले तो मेरे को बाहर निकाल दिया था ना। विंसेंजो को तो मैंने पहले ही मना कर दिया था इनको कि दूर रहो इस इंसान से, अरे स्टार्टिंग में भाई, बोल दिया था। मैंने बहुत बोला कि भाई अल्फ्रेड हो जा, अल्फ्रेड हो जा। अल्फ्रेड आता नहीं है ना, वरना हो जाता अल्फ्रेड वो कुछ ना कुछ। अल्फ्रेड तो अब तो पीडी का टाइम हो गया वैसे, टाइम नहीं हो वो गया। बोल रहा था रिजाइन कर दूंगा। क्या टाइम की बात है? 25 बोला था ना, 10 आ 25 जाए। 24 हो रहे हैं। 3 सुट्टे भी खत्म हो गए। तुमने 5 लाइट- मिनट में 3 खींच लिए। लाइटर दे देना एक ये मेरे पे भी, फिर गाड़ी में वेरी बैठेंगे सब स्ट्रांग चकराएगा। लंग्स, वेरी स्ट्रांग लंग्स। हाँ लाइटर देता हूँ। लंगी बोला ना मतलब लंग्स हाँ फेफड़े लंग्स बोला, हाँ, लंग्स बोला। हाँ लंग्स। फेफड़े में फेफड़े की बात कर Lawyer, क्या lawyer ऑफिस would है, be क्या inside, चीज़ right? है यार? दोनों Right? Come. 143 दोनों जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। Is he inside? He might be inside. Come. अरे गाइस तुमको वापस सर्च करना। नहीं मेरे साथी थे कहीं बाहर नहीं गए हैं, ऑफिस कहीं बाहर नहीं में गए उसके साथ ही थे। मेरे साथ हमारे साथी खड़े थे बाहर, कहीं नहीं ठीक गए है, हैं। जाओ। ऐसे बोला करो यार। सुट्टा नहीं वो मैं तुमसे सुट्टा मारा था खड़ा होके मुझे, क्यों मारा सुट्टा तुमने? इट्स माय चॉइस, इट्स योर चॉइस क्या? इट्स माय चॉइस। मैं सुट्टा डेट मारूं, चेंज हुआ, मैं डेट बीड़ी चेंज हुआ मारूं। नवंबर। ओए ओए नवंबर ही है, डेट से फिर से चेंज हो गया। हाँ नवंबर प्लान कर रहे हो इस बार? लास्ट टाइम जो हुई थी कौन सी? हैदराबाद सपने का जो था हैक करने का। अच्छा वो फिर से हो रहा है क्या? हाँ हर साल का। कब है? नवंबर? प्लान करो भाई, प्लान करो कोई सीन नहीं। पक्का ना? प्लान क्या मतलब, हमारा तो वही होता ना, हमारा कोई सीन नहीं। हेलो विराज जी, हम तो अब पहुंचेंगे, हमारा तो इस बार काम ही इनसे है। पूछे, इनसे पूछ लेना इस बार। बात कर रहे, कंसल्ट कर रहे, चलेगा ये? हाँ। Is it fine? इस बार थोड़ा बहुत बाकी का बात टाइम कर भी रहा हूँ निकाल लो, उनसे। ठीक है? वो बोल रहे कन्विक्टेड क्राइम वगैरह। तो फोन अंदर रखेगा, हर कुछ चीज रिकॉर्ड कर देता ना अंदर। ये व्लॉगर है, बहुत तेज बता रहे हैं, हम बता रहे हैं व्लॉगर है ये। हेलो गाइस, आज मैं कोर्ट में आ गया हूँ। ये वही आ रहा है। हेलो गाइस, वो व्लॉग में इनिशिएशन डालेगा ना, कहाँ से स्टार्ट हुई थी बातें। आ जा। Let's go inside. I think it's started. भाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर बातें कर लें, बाहर ना करें। कहाँ जा रहे हैं? तो दीवारों के पीछे ही बात कर ले, कहीं कोने में जाके। बाहर जाओगे अंदर आओगे सर्च करना पड़ेगा। क्या हुआ? रुको, आपकी फ्रिस्टिंग लगेगी। हाँ सर्च कर लीजिए, कोई हाँ, बात कर नहीं। लीजिए। आप सर्च कर लीजिए, कोई सीन नहीं। अरे मेरा हेडेक हो रहा है, इधर आ तू। एक मिनट ऑफ करो यार ये। ऑफ ही तो था। माधव जी गुस्सा कम करे, थूक दे। बिल्कुल बिल्कुल गर्मी हो रही है। आप ये इधर आए माधव जी, आप इधर अरे अंधेरा हो गया, ऐसे मेरे लिए हुआ है। ठंडे हो, यहाँ ठंडे हो। थैंक यू। प्याज की पकौड़ी खाएंगे अंग्रेजी वाली? काम करता हूँ, गर्म हो जाएंगे। पकौड़ी तो जस्ट आपको पसंद है। आप बताएं, आप खाएंगे प्याज की पकौड़ी? कर दे रहा हूँ वो भी मैं, अंग्रेजी वाली। लाओ पीपल बताएं। 162। ये लो प्याज की पकौड़ी खाओ, अंग्रेजी वाली। ओ भाई यही तो चाहिए थी।
डीए सर विंसेंजो कहाँ पे है? This is the only ring you can get, है? बाहर है ट्रेवॉन के साथ कोर्ट रूम के बाहर है वो। तभी आप लेके घूम रहे हो। और कोर्ट क्या? हाउस के बाहर है वो। इधर है। देखो पूरा केस के टाइम पे नहीं था, मसले के टाइम पे ये टीआरपी माधव आ गए इधर। ये पहले से था। मैं यही बैठा हूँ शुरू से। सबसे पहले आया। सबसे पहले आया। बाहर था इसका अभी तक उधर बैठा था मैं इस साइड सामने। सिस्टम बैठा रहा था थोड़ा। आपका नाम क्या भाईजान? आपको पहली बार देख रहे हैं। हर्ष। क्या? हर्ष हर्ष नाम। हर्ष पूरा नाम क्या है? नोहारा हर्ष नोहारा। नोहारा जी। एक बार ना जो डॉक्टर दिखा के दांत दिखा लेना, आपको शाइन बहुत ज्यादा मार रही है, आंखों में चुभ रहे। हाँ शायद वो आपके ब्रेसलेट के चक्कर में होंगे जिंदगी में, पर देख लेना। मेरी स्टेट हेड का काम होता है। स्टेट हेड से बात करता हूँ मैं, जज से बात क्या करूँ, मेरी लग जाएगी। अरे इन्होंने बोला ना क्या नाम डीए साहब नाम। हाँ तो डीए ने बोला। हाँ डीए तो बोला तो बताएगा। हाँ तुमसे यही करेंगे। हाँ तो कितना टोटल कितना मुझे बताओ, मैं भी करवा देता हूँ। बाहर जाके बात कर ले। अरे सही सही बताओ ना राम। एक पेपर पे इनवॉइस बना के दो ना मेरे को जल्दी से। हाँ बोले मेरे को इनवॉइस बना के दे दो ना, अब तो इजी रहेगा। ध्यान सर। साइलेंस प्लीज। मुझे नहीं पता, आपका जितना होता वो बताएं। अबे स्पेकुलेशन देव, इज अ रियल ऑब्जेक्शन। बोलो ना। भाई इसका मेंटल ट्रॉमा देख, हरकतें देख इसकी। कोने में दीवार के ऊपर करके उंगली कर रहा है दीवार पे। 10-7 बोलो नील कुछ बोल रहे थे। अबे मैं कह इसको रहा क्या हो दीवार में गया? वही मैं कह रहा, इसका मेंटल ट्रॉमा लग रहा है मेरे को ज्यादा। क्या आज तक है शायद थेरेपी इसलिए हो लेते रहा है। लेते खुद जरूरत है। हाँ थेरेपी लेते ये लेते देखो खुद ये जरूरत देखो पड़ गई। चारा कह रहा था हार्ट स्ट्रोक हो रखा है शायद इसलिए हो रहा है उसके साथ ऐसा। नहीं मैं बता, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, हार्ट स्ट्रक तो है। करो 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 देव, उसका बेचारा रेजिडेंट ही है, तुम अटेंडिंग हो गए हो। अरे क्या कर रही हैं? वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जज है प्रिटेंड कर कोर्ट रहा रूम में, ध्यान दो। अटेंशन भाई शोइंग है। उसको उठाया। अरे नील जज है कोर्ट रूम में, क्या कर रहे हो? मैं उसको लेने आया हूँ, दीवार में है वो। हमारा टेजर लॉक कैसा था, हमारा टेजर ना कोने में खड़ा कर दे पकड़ के। अभी वाला जो है चलो 5 मिनट पे आ जाएगा। नहीं बोल के गया। इधर कोने पे खड़ा कर दो ना इसको अंदर। अरे उसको बोला था वो इधर खड़ा हो गया, पता नहीं उंगली क्यों उठा दिया। Can everyone hear me? Yes sir. Even the doctors in the behind? चीजें ऑर्डर देते हैं। पहला वाला He's टेजर, पावरफुल टेजर 10-7 सर। मारने का झुक ही नहीं सकता बंदा, समझ रहे हो? एक या दो। Officer David, you can hear me, right? You guys can hear me in the back, right? Yes sir. दूसरा है Oh, great. मैंने देखा है भाई पैर के ऊपर वो गन जब टेजर जैसे Continue, आप continue. देखते हो यो जैसे बाहर निकलते हैं, पैर बाहर हो गया? गिरा देती है बंदे को। अरे तुम ऐसे उंगली करके कब तो कोने में चिपक के खड़े हो, दूर से अजीब लग रहा है वो जज को। उसका हाथ वैसे भी खुला रहेगा, उसके पास पैर जज Speaking something we cannot hear you. लेग्स जो है वो टाइट हो जाएगा। जगा दिया मैंने उसको। आजा लूसी। ऐसे कोने में उंगली करके खड़ा हो गया था। Mr. Trevor, can you hear the... Yes, I सोफा के लेके जाना पड़ेगा। Are you okay now? I'm hearing you, yes. Perfect. बात कर पड़े। Moving on, we will not be taking into account anything that happened at LS Customs because of conflicting statements. Okay. Also, Vincenzo, we will be not taking into account the exhibit you submitted with the LS Customs earning cap. Yes. Perfect. Mr. Trevon James, what were the charges levied to you and what was the jail time given to you? Excuse me. Let me put on airplane mode. Sure. Repeat your question. What was the jail time given to you? There was no jail time given, but I was arrested by his words and put in the backseat of a police car. Okay. Were you left off with a warning? No, he read me my Miranda rights and left me in the police car, and later he just came back and unlocked the car, let me uncuffed me, and that's it. He didn't say nothing about
a warning, or we letting you go. Nothing regarding that. But that for that, if you want to know exactly what happened, you have to ask Mr. Chuck Capone, because he's the one that and Athena who spoke with him. No, I just want to know what happened with you. Moving on, when you were in the back of the car, did you ask for a lawyer? Can you repeat the question? When you were in the back of the police car, did you ask for a lawyer? If I asked for a lawyer, I did tell the officer indeed that I will be going to court. But he also advised me to do that. When he told me I'm arrested, and I asked him, "Are you arresting me for giving my opinion?" And he said yes. And then he said, "Bring it to court." So he indirectly advised me to get a lawyer and go to court. No, did you ask for one? Is my question. If I asked for a lawyer, I indeed asked for a lawyer, and that's when Mr. Chuck Capone called the lawyer. Okay, Mr. Chuck called for a lawyer. Was there any lawyer present beside your car at that point of time? Can you repeat that? Was there any lawyer present at the scene at that point of time? Not that I'm aware of. Okay. And what were the rights read to you by Mr. Robert? The Miranda rights, sir. What were the rights? You have the right to remain silent, everything you can say. The Miranda rights. Please go on. You have the right to remain silent. Everything you can say will be used against you in the court of law. You have a right for medical help, like something like that. The Miranda rights, sir. I'm not a cop. I don't know it exactly, but I know it's the Miranda rights. And he asked me if I understood my rights, and I told him yes. Okay, you say it were the Miranda rights, but you don't remember what they read to you. Okay, fine. For now, that's it for Mr. Trevon James, Mr. Judge. I might recall him at the witness stand later in the case. Mr. Judge? No, that's fine. Yeah, Mr. Trevon? Mr. Trevon, you can get back to your seat. Yes, okay, thank you. Your Lordship, I have a request. I know it's usually the prosecution which calls for the next witness, but at this point of time, if made an exception, I would like to call my next witness. I hope you don't have a problem with that, Vincenzo. No, I don't have any problem. Yeah, please go ahead. I would like to call Mr. Takat to the stand. Sure. Mr. Takat, therein, please proceed to the stand to my left. मिस्टर ताकत आप एक बार एक ओथ ले लेंगे मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा Thank you. Vincenzo, do you want to take the questioning first since you're prosecution? No, you can. Perfect. He's a witness, you can. Thank you. No, I just was cross-checking. Mr. Takat, क्या आप बता सकते हैं कोर्ट रूम को कि आपके साथ उस दिन क्या हुआ? तो उस दिन I was with my friend and suddenly Angad, Mr. is he comfortable with English? Because I guess Travan won't be able to understand Hindi. Yeah, let's try and take English this. Yeah, let's try and take this one ahead in English because as much as possible. Okay, as much as I can. Yeah. So suddenly Mr. James showed up and he was a bit rude and very over-aggressively talking to me, and suddenly he pushed me. So when he pushed me, I told him, please don't push me or I'll just go to the PD and report it. And he again pushed me, so I ran to Mr. Robert. Where was it? I ran to Mr. Robert and I complained that he is trying to assault me. And after, this all happened. Okay. What did Mr. Robert say to you at that point of time? What? Can you pardon?
What did Mr. Robert say to you at that point of time? Yeah, मतलब Can you hear me? Hello, can you guys hear me? You can explain the question to me in Hindi if you want. नहीं उन्होंने हिंदी आप इतनी भी कमजोर नहीं है मुझे पता है रॉबर्ट ने क्या बोला Okay, था okay. I'm trying to recall it's like 30 minutes I'm sitting and it's Please like go ahead. Okay, Yeah, no yeah. problem, No, no try to problem. recall. Try to recall. Are you okay, Mr. Mayor? yeah I'm still trying to recall it नहीं मैं आपसे पूछ रहा था उन्होंने आपको क्या कहा मतलब कुछ बताया होगा ना कि ये करना है ये नहीं करना है कुछ तो बोला होगा आपको उन्होंने वार्निंग दिया था मुझे He gave me a warning अच्छा आपको वार्निंग दिया था yeah ठीक क्योंकि है at the exact same time Mr. James went to another officer that's why it was like a warning to both of us कि आप please be silent ठीक है और उस वार्निंग के बाद व्हाट हैपेंड एक उस वार्निंग के बाद जज को छोड़ के मतलब मैं I just left that place और उसके बाद Mr. James वहाँ पे थे and he started talking very rudely to Mr. Robert. अच्छा would you describe Mr. James' behavior overly aggressive? Yeah, मतलब I was standing and suddenly he pushed me and I warned him that I'll go to PD but he was not at all afraid of it and he pushed me again. So that's why I felt he was very over aggressive and very rude. Okay, thank you, Mr. Thakur. Thank you, Judge. Yes, Sensei, your witness. Yes. Thank you. Yes, I'm audible. Yes. So, Mr. Thakur, Mr. James Raman is not like a mad person or something that he comes in and directly push you away. So, was there any incident or something, some conversations between you two? Angad, I cannot hear you. That's the mic on. Objection, Your Honor, leading the witness. खाना पीना है कुछ खाना पीना No, I'm asking him. Sustained. No. You Oh, were नहीं sir. asking the question with the result. No worries. Yeah. Was there any conversation between you and Mr. Trevon James? At I that plead my incident? fifth. Okay, no problem. Okay, so did you made any statement about after you were given the warning by Mr. Robert? अरे मेरे पास ही नहीं है Any statement regarding what? खाना पीना दो After Mr. Robert Wilson warned both of you for the assault thing, did you made any statement to Mr. Trevon James? No, I don't Did you remember say that. anything to Trevon James? No, I don't remember that. You don't remember that. Okay. Yeah. Okay, so I have a very small question for you. Okay, you are a mayor as well. So what is your take, like, what is your perspective of people keeping negative opinion on civilians or cops? My take on people. Object. Yes. What's the objection? There's no objection. Objection as in like a mayor's opinion in a court case. I mean, it doesn't matter. But he is a witness. He wasn't a mayor at that point in time, I guess. Yes. Yes. As a So, civilian, Mr. Takat, what is your opinion on? I won't say opinion, but what is your perspective on a person keeping negative opinions? Again, objection. How would his opinion matter to this case? I was not the mayor that time, so Sustained. why you want my opinion? Why do you want to know about his opinion as a civilian as well? I'm asking whether a person can keep a negative opinion or not. Or But opinion should be always be positive. Yeah. But in general, you have to take that into consideration. Okay, so I have one question for you. As you are like a politician, in your rallies, did you make any negative opinion or comments on the last mayor or the opposing parties? Objection. Was that unconstitutional? Objection. Relevance. Sustained. Okay. How is that relevant to this case?
the case is all about keeping a negative opinion. So how No, is the that? case is about No, but that wrongful is not. prosecution. Yes, the case is It's about violation of you saying that Officer Robert, yes, unjustly arrested your client. yes. That is what the case He is about. unjustly arrested my client for keeping his opinion. I'm asking Mr. Yeah, Takat freedom that of speech, but it nowhere involves negative or whatever you were saying just before. That is why the objection which Angad just made, that has been sustained. okay, no problem. Yeah. Okay. For now, like no more questions for Mr. Takat. Thank you so much. Mr. Mayor, thank you so much. Thank you so much, guys. I didn't know. It's okay. May I leave the court if you don't mind? Sure, It's a absolutely, you request. can. Yeah, If you there can. is anything, yeah, just give me a call. I'll be there. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Can one Have of a good day, the Mayor, officers sir. escort the mayor? आजा जंबाल जी. Get a car, escort him to the. Car is outside only. I think Jambal sir. Jambal has a call, right? Yes, yes, I have. Is it in Escort his him front to- or Pressure है भाई, pressure दे दिया भाई. बहुत हाई लेवल वाला अंग्रेजी है. अरे भाई साहब, हाई लेवल वाला अंग्रेजी छोड़ो यार. क्या यार, मतलब समझ रहे हो? अभी क्या है कि एक तो इतना विटनेस था, ठीक है, और अब मैंने बोला कि यार मेरे को अगर कुछ विटनेस होगा तो आप मुझे वापस बुला लेना, है ना? यहाँ पे बैठे रह के क्या ही होगा. सुनो जंबाल जी, जी 1000 रुपए बाद में दे जाना खम्मे के. केस तो शुरू हुआ है अभी. केस तो शुरू हुआ है. बहुत लेट का क्या हाल है? सर अभी तो चल रही है, बात विवाद हो रहे हैं, सवाल जवाब लंबी खबर. रॉबर्ट सर क्या लगता है हारेंगे जीतेंगे? यार जीतेंगे ऑब्वियसली, क्यों हारेंगे? वैसे केस क्यों हो रहा है, टोटल बताना जरा. क्या मतलब किस बेसिस पे केस फाइल हुआ है? केस फाइल हुआ पता है तो है बट हाँ, बस किसी को हथकड़ी बना के गाड़ी में बिठा दिया था क्योंकि उसने कुछ हरकतें करी थी एंड देन अच्छा। उसको छोड़ दिया था, तो फिर अच्छा। उस बंदे का मेंटल हरासमेंट हो गया है उसमें. हाँ, उसने किया harassment क्या हो था? गया. उसने बोला था यू आर अ करप्ट कॉप बिच एस, पता नहीं क्या क्या बोला था उसने. तो गाली वाली दी थी. बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट ऑफ अ लियो. ना बट वो कह रहा, उसका बंदे का कहना है कि उसके घर पे मतलब उसके एरिया में ऐसी ही लैंग्वेज बोलते हैं. इट्स नॉट अ एरिया डिसरिस्पेक्ट में ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जहाँ से वो आया है. गाली दे के. हाँ तेरी मतलब बहन बिच की, एस, तेरी माँ की, तेरी बहन की, बिच तेरी एस माँ इज की, तेरी बहन की, बिच कांडू एस इज बहन. कॉमन. मतलब वही बात है ना, कोई हरियाणा वाला बंदा आके किसी तू तोड़ा कर देता है जोनी तो तेरी बहन डिसरिस्पेक्ट की, तेरी बुंड, तेरी बुंड, चूतिया तो चूतिया. ऐसे अरे जैसे वो नहीं होते, आप जब जाते हो नीचे इधर ग्रोव स्ट्रीट टाइप में, तो चलते चलते लोकल बोल के नहीं जाते हैं. you motherfucker. हाँ वही वाला. Motherfucking bitch ass. आपको बड़ा एक्सपीरियंस है बात सुनने का. अरे नहीं, मैं गया था ना उधर, तो साले लोकल आज जाते जाते हाँ, बोले भौंक के जाते हैं. हाँ वो तो वो वही, उसका वही. ऐसे कहना है कि वो ऐसे ही बात करता है वो भी. आप मिले नहीं हो किस बंदे से, ट्रेवोन से? मिला मैं, तुम्हें नहीं पता, पहले दिन मेरे से ही मिला है वो हीरा लेके आ गया था उसको. अच्छा अच्छा अच्छा. उससे पीछे छुड़वाया मैंने. हाँ तो वही, मतलब उसके लिए डिक्शनरी रखनी पड़ेगी साथ में. Tommy, हाँ, you वही तो. bitch fucking bitch ass. हाँ bitch ass. Yeah. You too. bitch ass. चलो मिलते हैं. बड़े क्या मुन्नी है मेरा. Yes bitch ass. That's it. Like I requested him to let him go. That's it. You know, that was a long conversation, but I don't remember that all of it. So yeah. Okay, so did he give any particular reason that why he's leaving Mr. Trevon James, or just it was on your request? I requested him, and he was like, while he was uncuffing him, he just said that you have good friends. That's why I'm leaving you. You got some good friends, to be precise. That was the case, I feel. Yeah.
Okay, did ever happened with you that you kept your opinion and you also got arrested? Happened like, yeah, it happened. Can you tell the court about that incident also? Objection relevance. How is it relevant? Vincenzo, can you Police tell that? officers are arresting people for keeping their opinion again and again. Also, if That there should have was a been a different violation. case, Vincenzo. Yes, why there was no case? Sustained. मेरे को बोलने का है नहीं बोलने का है? कैसे क्या? नहीं, you don't have Okay. to. Not right now, not right now. मतलब अभी नहीं बोलने का है, रोके Okay, 2 मिनट जज रोके. Okay, जज Okay. Okay, so do you also come from the same place or like similar place from where Mr. Trevon comes? Yeah, that's my homie, see? Yeah. Okay, I mean, so I'm can from you Los also- Santos, but he's like my race, you know? That's what. Okay, so can you also tell us about few of your linguistics things? I mean, I have some Hindi slangs as well. They're usually we call cops like tulla, but we don't disrespect them, you know? It's just a slang, that's it. Plus, in English, we say like PDK and everything. There are a lot of slangs, bro, but I mean, that is not relevant here, you know? Los Santos में English sense है. Yeah. Okay, for now, like these many questions, I will re-ask some questions once defense is done. कटप्पा को क्यों मारा था पता है तुमको? What is Riaz? क्यों मारा था? ये अभी 5th में जो शूट करके Good आया, afternoon, उसमें Mr. पता Chuck. चलेगा आप लोगों को. Good evening. Yeah. मैंने हाइप क्रिएट कर दी. Yes, Losing Angad time bhai. is so long. गुल्लू दादा एक बात बताओ। Chuck, पटाखे की याद आपको चौक को देख के आई। when you were discussing the case about or whatever incident which happened for Mr. Trevon James, who all were present there with you? You're asking too much here. I mean, I don't know, bro. If there was like multiple people, there were voting happening over there, you know? There was one lawyer. हाँ देखो. I don't और remember his ऑफिसर name. कैसे हो यार? I remember that. Then Robert was there, and yeah, that's all I can recall. And there was my girl as well, Athena. And no one else, like. इनकी बेटी भी. There were a lot of people, bro. I mean, you know. No, in your conversation. Who were there in the conversation? There were multiple co-ops as well over there, you know. Okay, and during this discussion, you were a part of Agni Janata Party, if I'm not wrong. That was the name, right? Nah, I'm not a part. Like, I'm not a member of any party. I just support. I mean, you know, it's my Agni opinion. Janata to Party support. तो मेरी थी. Lack of foundation. Lack of foundation about Like फाउंडेशन लगा क्या है? I'm really sorry. Objection. Relevance. Are you sure it's Objection, your relevant? milord. Yes, I'm pretty sure. Relevant. Optical testicle. Trevon James got into a scuffle with the mayor candidate of Janata Party. यार आप कैसे हो यार? आपकी दुआएं हैं. That is relevant to this case because that person was that person was a witness. Please go ahead. ये लड़ क्यों रहे हैं? Overruled, Vincenzo. So was you support that party, right? Was Mr. Gullu present over there? Yeah, Gullu was there, I feel. Hey, गुल्लू तो इधर है. What was your conversation you had with Mr. Robert? हाँ मैं था. बुलाओ ले कटकड़े में लोगों को बुलाओ. He tried to explain me the whole scenario. मैं बात करता हूँ. Like he was being like Trevon was being abusive, and he was saying that he's corrupt officer while he was on duty. So he was like, it doesn't look good in public. That's all he said, and I said, please forgive him. He's to be honest good guy, but after all that incident, Trevon is like acting different, you know. Revlon कौन है? Thank you, Mr. Truck. No more questions. Okay. वाइट शर्ट बैठा हुआ. रेवलॉन मेकअप की कंपनी है गुल्लू दादा. हाँ. रेवलॉन नहीं, ट्रेवोन. Yes, you can leave. Yes, you can. Mr. Chuck. Thank you. हो गया? राधे राधे क्यों करता है बंदा आगे हर दिन? खाना मैं पीना है, खाना नहीं है. So खाना. Okay, I would like to call Miss Athena. आया. On the witness box. चलो. Sure, please go. मेरा तो काम नहीं है ना, मैं जाऊँ. मुझे तो नहीं बुलाएंगे ना? नहीं, आपका नाम दिया था लिस्ट में किसी ने? पता नहीं यार, मैं तो आज ही आया हूँ, पता नहीं. हाँ, तो फिर नहीं है. मतलब जाओ ना मैं. हाँ, जा सकते हो. मेल आ जाता है. Listener, please take the oath. I, your name.
I, Athena Ash, swears on the city's constitution, swears on the city's constitution. will say only the truth I will only say the truth and nothing beside it. and nothing besides the truth. Okay, so were you present at the time of the incident? Yes, I was present at the time he was being, Mr. Trevion was being cuffed and put in the backseat of the police car. That was when I came with Mr. Capone. Okay, so can you please explain what conversation they have after putting Mr. Trevon in the car? As Mr. Capone stated, that we were having a word with Captain Robert, and we asked him what happened. So he narrated the situation that Mr. Trevion called him a corrupt cop in public. So he was upset about that, and eventually, like after, I think the conversation went on for like 15 minutes, I guess. The whole conclusion was that Yes, sir. if he just apologizes, he will be let go for the corrupt cop statement that was made. He was sad about the use of a slang language, or he was upset about him giving an opinion? He was upset about the opinion in particular. Like that was the main thing that was upsetting him. जी सर इधर आओ. And can you also tell the court why did he leave, Mr. Trevon? After Mr. Capone made a request, like he said that he's new to the city and but he's a good guy and everything. So he was let go after that, after the request was made by Mr. Capone. Okay, yeah, that's these many questions only, Your Honor. All right. Should I leave? Your Honor? No, you have to wait. No, ma'am. For the I'll keep it short. I know you're first busy. questioning. All right. Okay. So you saw Mr. Trevon get cuffed and sit in the backseat of the car. Yes. Perfect. Now that we've established that, ma'am, could you tell me about Mr. Roberts' behavior during the whole incident? Like I said, we came a little later. I did not exactly see when Mr. Takat and Trevion were having a problem, and that time I didn't idea. But later on, we just spoke to Officer Robert in the corner, and he wasn't like communicating much with Trevion at that time. So No, he was just I was asking about Mr. Roberts' behavior with you and everyone with else. us. With us, with us, he was willing to communicate, and he was willing to have a conversation. And at our requests, he was cooperative that time, I would say. Okay, ma'am. And any other people present over there which Mr. Capone would have missed? I think it was one of our friends. I think it was Love, and then I think it was Gulu. Gulu was also there. I think Gulu Seth was also there. Okay. Other than that, I can't recall other names. So, you, Mr. Capone, Mr. Gulu, and Mr. Love are all friends with Mr. Trevon James. Yes. Perfect. Thank you. No further questions, Your Honor. Thank you. You can. Yeah. Yes, Vincenzo. Yeah, I would like to present Exhibit A. Before I call the doctor himself, I want to present the Exhibit A in the court. Viraj, can you please put the Exhibit A on the Screen. Yes. Your Honor, this is a medical report of the treatment which currently my client Mr. Trevon is going through, and the judge and the doctor here, he is here himself to testify and explain the report to us.
So while he is exhibit, like we are placing the image, I would like to call the doctor Lucifer Morningstar. Yeah. All the best. ये नींद में तो नहीं है भाई? नहीं. Okay, that is too bright and cannot be seen from here. Judge, objection on the witness. The objection is? Objecting to the witness, relevance to the case. He's a It doctor, is- Mr. He Trevor. needs to. I'm overruling the objection because Vincenzo has apparently Mr. Trevon has gone through therapy because of this incident, and he needs to prove that the mental state of Trevon. His Oh, client. That's what he's showcasing. So if we just accept the report, can't we move on? No, he just for the explanation he has asked for the doctor. Okay, perfect. Thank Which is fine. Let the doctor No explain. problem, no Let them do their work. Yeah. Please, doctor, proceed this time. Thank you. लग गया लूसीफर के, मैं बता रहा हूँ। ना तैयारी है। किसने करवाई है? बच्चे का होमवर्क Okay, so I guess he's on duty, so we need not to get him under oath. Not necessary. You can still get him on the booth. Okay, no problem. सुनना। Doctor, you can take your mic from there. Yeah. ठीक है, mic from there क्या? You are very like I cannot hear you properly. Recording हो ना? Can you be a bit loud? बुद्धि Yes. You can turn on the mic from here. Yes, it's already on. Great, we can hear you. Okay. You can please take the oath. Repeat after me. I, your name. I, Dr. Lucifer Morning. रहने दे रहे। Swears on the city's constitution Swears on the city constitution. that I will speak only the truth गेट खोलना नहीं and nothing besides the truth. And nothing besides it. Okay. Can you kindly explain the report to the court? Surely, sir. First of all, इन्होंने हमसे एक मेल पे इन्होंने अपना सर माइक ऑन करने बोल दो प्लीज सुनाई नहीं। डॉक्टर का आवाज ही नहीं आ रहा। लुसी माइक ऑन कर। उनका माइक ऑन नहीं है शायद। सर माइक ऑन करने बोल Can you दीजिए। turn on the mic again? Try again. Like turn it off, shout, and then turn it. इधर से टर्न ऑन करना। Now it's on. Yeah. Yes, now it is on. So just I am saying that कि इन्होंने पहला अपॉइंटमेंट 24 जुलाई को लिया था on the mail and फिर डॉक्टर जोनाथन ने इनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था on July 25th. तो इन्होंने इनके रिक्वेस्ट पे ही इनका जो अपॉइंटमेंट था वो रीशेड्यूल किया था on 28th of July. But Dr. Jonathan had a head pop, so उस दिन भी इनका थेरेपी नहीं हो पाई थी। So इनकी Doctor, can you please explain the report? Like, Okay. I'm not asking about here. Sure. तो ये सर ये 30th जुलाई को आए थे हमारे सेंट्रल लॉसिटोन मेडिकल सेंटर। इन्होंने अपना सिचुएशन बताई थी कि लाइक व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन द सिचुएशन। So he was telling that Officer Robert मतलब PD ऑफिसर ने इनको अरेस्ट किया था विदाउट लाइक एनी सॉलिड रीजन। इन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा हर्ट थे क्योंकि इनके हिसाब से इनकी इमेज जो है बाहर वो खराब हो गई थी एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिम दैट ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ बैड पर्सन। एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि that his kids were bullied in the schools and ये थोड़ा सा ये सो नहीं पा रहे थे बेसिकली। ये ट्रॉमेटाइज हो गए थे आफ्टर दिस इंसिडेंट। इनके फर्स्ट सेशन में मेरे को इतना पता लगा एंड इनका सेकंड सेशन जो हुआ ये आए, इन्होंने इनका प्रोग्रेशन काफी अच्छा था, इन्होंने मेरी एडवाइसेस काफी सुनी। आफ्टर इनका जब मैंने सेकंड सेशन लिया तो इन्होंने मेरे को
एक चीज बताई थी कि इन्होंने एक एलएस कस्टम्स में इन्होंने अब जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वो रिजेक्ट हो गया था। Wait, okay, you need not to say about that thing. You just explain the, what are the symptoms of I him have or an what? objection, Vincent. तो objection तो Okay, complete okay. हो जाने दो। क्या हो गया यार? क्या मुझे कोई कुछ खाने के लिए देगा? Yes sir. शिवराज है तुम्हारे पास? You guys want food? My PayPal is 175. Vincent तो यार तुम अच्छे हो। Objection complete करने दिया करो। माफ करें यार, फ्लो में थोड़ा ज्यादा निकल जाते हैं हम। क्या हुआ? हाँ हाँ, रोक दीजिए क्या? कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Trevon, get down. अच्छा, Vincenzo एक request है। Officer Faisal has a duty emergency, so he would like to be called next if that's okay with you. एक house. Next वही है, कोई दिक्कत। Sir, I had an objection. Most of the report contains the incident happened at LS Customs, which he has discussed will be stricken off the case. Hereby, I request you to strike off the report. And the report also contain the status of his current mental health, so it cannot be from consideration. It's just about sharing his things, not mental states. कोई नहीं।
You're a practicing professional doctor, right? Yes. Why does this report state your personal opinion? So because मैं ही इनका सेशंस दोनों देख रहा था. So in my point of view, he is like mental traumatized because of this incident, and that's why I mentioned my opinion on the report. So you're so unsure आपके जो डिडक्शन है इस केस और थेरेपी का कि आपने प्रोफेशनल ओपिनियन की जगह पर्सनल ओपिनियन मेंशन किया. Section, like he's a doctor, he has mentioned all the points which he have noticed in his patient. Yeah, that should be his What is professional that? opinion. Yeah, that is Not the his professional opinion only. He's mentioned personal opinion on the report, Vincenzo. Didn't we just agree that everything else will be stricken off and we are just keeping the mental state of the current? I Yeah, thought we just done that. that's what he's written, sir. Personal opinion on 2 sessions. मतलब उनका opinion as a doctor on the session, on the mental After state. we have taken the mental state into account. ठीक है, sir. But that's what I'm trying to point out, that the mental state is not on professional account. It is on a personal account. Anyway, no more Of the questions, doctor? sir. Of the doctor, yes. Doctor ने professional opinion नहीं दिया, अपना personal opinion दिया है. Report पे भी. Professional opinion तो दिया है, तभी तो report दिया है. नहीं सर, report पे personal opinion लिखा गया है. आप नीचे देखेंगे report में उधर लिखा है Sir, can I personal opinion on say 2 sessions. something here? Sorry to cut you, sir, but मेरा जो No, but personal opinion. Angad, I am going to take into account the report which is there. It has Central Los Santos' report. It has the it's there on their letterhead. Even if a doctor is giving an opinion personally on that particular report, I will take that into account. बिल्कुल sir, I'm not objecting on the fact that the report, it should not be there in the report. I'm just stating to the court that the doctor was so unsure of his deduction that he's mentioned personal and not professional. I'm just drawing that Can I parallel. speak something here, sir, please, if you don't Yes, mind? sure. So, if are you pointing out that उस पे personal opinion लिखा है, तो sir उस पे personal opinion on second session लिखा है sir. Like क्योंकि 2 session हुए ना, एक first हुआ एक second हुआ. एक बाकी But है second अभी. session पे मैंने उस पे बोला था. I And think इनका we third are अभी भी pending है. digressing from Okay, no problem, the sir. whole I withdraw the agenda. question, sir. No more questions for the doctors. Thank you so much, doctor. Thanks, sir. Can I leave now? Yes. बुला लें अंगद सर बुला सकते हैं फजल. Alright, Robert. Best of luck. Faisal ji, Your Honor, I will be taking your leave. Angad will be Sure. taking care of this. Sure, Atticus. Yeah. Thank you. Best of sir, luck, Vincenzo. Sure. thank you, Thank you, sir. Fazal. Judge sir, my next witness, again, I know I'm calling it out of procedure over here, but उनकी भी पुलिस की ड्यूटी है, कुछ जो उन्हें देने जानी है, तो मैं मिस्टर फैजल को बुलाना चाहूँगा. Yeah, it's okay with me. It's okay with Mr. Vincenzo as well. Yes. आ जाइए मिस्टर फैजल. Do you want to question him or should I? No, you can go ahead. Excuse me, Judge, are you there? Yes, I'm here. Yeah. Mr. Faisal, can you take your oath, please? Mr. Faisal is not audible. Mr. Faisal, can you take a mic? Can you turn the mic on? Mr. Faisal? Sorry, Officer Faisal. I still cannot hear him. Is his mic on? I also cannot hear him. Can you hear me? Can you hear me now? Yes, we can Yes, hear yes, you. yes. Yes, perfect. Okay. I, Faisal Khan,
Sir, can you tell me what to say? I, Faiz, you have to say I, your name, swear whatever I'll say will be the truth, nothing but the truth. I, Faisal Khan, swear that whatever I say in court today will be the truth and nothing besides the truth. Mr. Faisal, could you describe what happened when Mr. Trevon James approached or came to you during the day of the incident? Yes, sir, I was giving election duty on that day, and I was approached by Mr. Trayvon James with a complaint that he said that Mr. Takat was assaulting him and I should do something about it. The moment he said that, and before I could react, my captain in the police department, Robert Wilson, sir, also came to the spot. And I was going to tell him about this complaint, but he had come with Mr. Takat, and he told all of us there, especially the two parties, Trevon and Mr. Takat, that if you guys, I've received complaints from both sides. If you have, you guys need to stop this fight immediately. I'm giving you a warning. Okay, Mr. Faisal. You want me to continue after that? No. Post that, were you involved with anything or did you take a leave? I was. I did not take a leave. I was standing right there. After that, Mr. Takat was also there. Mr. Takat said after Robert sir warned both of them. Mr. Takat said something to, I don't know who in particular, saying that "एक बार फिर मत मारना मुझे." Something on those lines. I don't fully remember. It was a few days ago, and Mr. Trayvon got a little aggressive and excited and started talking to Robert sir, asking him to take action because it's something the other person is saying something right in front of you. Mr. Robert still kept calm and said that I've given a warning to both. Don't repeat it. I'm not doing anything right now, but if you do it again, and he said that to both, including Mr. Takat. Okay. If anything else happens, I will have to take action. And after that, Mr. Trayvon, sir, can I say exactly what he said? Because it's a little offensive to me. You can go ahead. You can. Okay. He said that you're not acting the right way. I want to report to you're not doing the right thing. He's threatening you in front of you. And Robert says, if you have a problem with what I'm doing, you can file a complaint. Which Mr. Trayvon asked who should I report to the High Command? What's your rank? And after that, I think this has already been covered in what Trayvon said. But Robert sir said that he's a captain. Trayvon got even more aggressive, saying that, this is, if you're the captain, how can I file a report against you? You're a bitch-ass corrupt officer. Okay, point to be noted, bitch ass corrupt officer was the word used. And after that, Mr. Trayvon was cuffed by Officer Robert, and he was taken away somewhere away from me. I stayed there because I was still on election duty, and I was not involved in anything after that. Okay. Mr. Faisal, how tough and chaotic are election duties? It's very chaotic, sir. There are people who don't want to spend a lot of time for voting, but we have to make sure that we ensure that they're not carrying any lethals inside. It's a lot of commotion, and at that time also there were quite a few people there. Both I saw Mr. Takat. I'm not sure if I saw the other candidate, but the candidates are also coming and going and talking to a lot of people. So long story short, it is very chaotic, and we have to keep trying to maintain order all the time. Thank you, Mr. Faisal. All my questions have been answered. Your witness, Vincenzo. Thank you. Am I audible? My mic is on, right? Yes. Okay. So, Officer Faisal, I have very few questions for you, which is like, when Mr. Trevon came to you, what actions did you take for his report? So when Mr. Trevon came to me and told that, as an officer, I was ready to write a report. And in fact, before that, my first action would have been, I'll tell you why I didn't take it also, would have been to identify if
the person who he's accusing of assaulting him is also there, and I knew that my commanding officers, the captains there, so I would have brought the officers together anyway. But I did not do any of that, sir, because the moment Mr. Trevon finished his sentence, literally 2 seconds, 3 seconds after that, Robert sir was also there and Takat was also there, and Robert sir started talking, so I let my senior officer handle it. Okay, did you witness any threat or intimidation made by Mr. Takat Bilzerian towards Trevon during this incident? I will tell you, sir, exactly what I heard Mr. Takat say. I am not, I think, the best person to determine whether it's a threat or a warning or whatever. But what Mr. Takat said was कि एक बार और करे, एक बार और मत करना, don't do it again or else, something of that sort. So, But the senior you are a officer police was there. officer. Yeah, you are a police officer. You know what is a criminal threat. Yes, sir. I'm just asking a politely question. Yes, sir. In my professional opinion, I don't think it was a criminal threat had made at that time. He just asked him to stop whatever he was doing. But he did said, right? The things he said. Okay. No problem. Okay, were you when Mr. Trevon said about Robert Officer, did he mention anything about his that he's stating his opinion and not nothing else? I mean, from my memory, the best I served, he said that I'll go back to that statement when he said that how can I complain against you if you're the highest ranking officer? In my opinion, you are a bitch ass corrupt officer. Yes. But Point to be noted, Your Honor. He like Officer Fazal said, in my opinion, you are. So clearly stated his opinion there, and not any warning or threat to like that. May I say something to just answer that question again, lawyer sir? No, that is okay for me. Okay, sir. Yes. Sir, I have one last question. Sure, go ahead. Mr. Faisal, you can say what you wanted to say. Thank you. What did you want to say? The question is, what did you want to say? I wanted to say that even if someone doesn't use, in my opinion, isn't that still his opinion? That's not a statement. That's a question, Mr. Faisal. Sorry, no more questions. Nice one, though. Thank you, Mr. Faisal. Give me a second. ऐसी बातें करोगे, ऐसी गिरोगे. Any other witness, sir? I have very last witness and like few questions from him, and then we can move to closing statements as well. The name is Mr. Nigel. The buff guy coming into the room. 3, 2, 1. चाहिए मुझे बुलाया है क्या नील भाई हाँ बुलाया कहाँ से जाना है अंगद अंदर जाओ This guy was not even present there. Please take your mic and repeat after me. I, your name. Wait, I'm trying to grab the mic. Okay. I'm audible? Yes, you are. Yeah. I, your name. I, Nigel Uno. Swears on the city's constitution. Swears on the city's constitution. Will say only the truth. Will say only the truth. And nothing besides truth. And nothing besides truth. Okay. So, Mr. Nigel, can we please just give me 1 second? Can we please remove that report from the screen right now? Yes. जज ने पहले ही वो जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया ठीक है विंसन से वही पॉइंट फिर से प्रूव करने के लिए उसको लेके गया Actually, we have to pay something else. Someone can do that. Like I don't have. I'll check.
Yeah. I guess you won't be able to do that. That has access for DOJ, I guess. Or maybe. Cannot. Angad sir, can you do that thing? Ryan, you can. Kabir sir, you can do, I guess. Kabir sir will be able to do it. या क्या करना क्या वो इमेज हटा के वहाँ पे लाइक लोगो लगा दो सिटी हॉल का. या हाँ वही करते कांड क्योंकि इसने मेरे को क्या बोला पता है if I lose this case we are smoking बोल समझ में नहीं आ रहा. हाँ बोलता है अब ना रुक रहा उसके बाद में पूरा काला जादू में आ जाऊंगा बोले बहन से सबको मारे पीटेंगे पीटी मारे फुल ब्लैक साइड सिंपल बात. उनके तरफ तो सब कुछ है. ये क्या ही प्रूव कर रहा है. सारी काला कांड करूंगा नहीं तो कंपनी खोलूंगा अगर हाँ. जीत गए तो फिर तो हारना चाहिए. वही बोल रहा फिर तो हारना चाहिए. इसका बर्थडे था ना? मेरा बर्थडे था. कब 4 तारीख है. Yeah, go ahead. 5 तारीख को बर्थडे है, 4 तारीख को पार्टी है. Okay, Mr. Nigel, were you present there at the time of this incident? No. No. Do you know about this incident? My friends told me about it. Why and what did they told you about the incident? Honestly, they told me about that Trevon was trying to have a conversation with Takat, and Takat's attitude or behavior towards Trevon was little challenging. Like he was trying to poke or challenge him in some way or the other, and something happened, and like then he reported it out to Robert, and Robert was not helping him out properly the way Trevon wanted. So Trevon passed some comments that you are corrupt if you are favoring Takat and not listening to my and not writing down my complaint. So Robert arrested him for that. That's what I mean. Okay. And now, does this change your opinion on Mr. Trevon? I think Trevon is. So I'll be honest. I have done some petty thefts in the city. I have some criminal records. I have been guilty for that. So I believe Trevon is one of us, and since he's not good with cops, so I think so. So, Your Honor, the incident has gone from one mouth to another, leading a bad image of client in front of the society. That's our question for Mr. Nigel. The defense may ask questions. किसका फोन है? Am I a bad person? No, you're not. Nigel, you're not a bad person. No. I would like to apologize on my prosecutor's behalf, Mr. Vincenzo. I'm sorry for you to have felt like a bad person. Simple question. Which friend told you about this incident? Chug. Okay. Chug, who in his There were, I think, Love and Cole were also there, but I don't have any clear image. But I remember Chug was there. Chug was there, and so you felt he was one of you, so that doesn't create a bad image for Trevon, right? No, it's like it's good for me. So your relationship with Trevon James is in healthy standing. It's healthy for me. Like I Yeah, have tomorrow. done some... Please go ahead. Sorry for cutting you off. Yeah. Just want to know. So you're good with him. You would work with him, and you have no problems with him, right? Yes. Perfect. Thank you. Witness can be excused, sir. Yes. Yes, like no more questions from my side. Also, we can move to closing statement if the defense doesn't have any. No witness Let's can go for move closing. sir. to Closing. Prepared for closing. Yeah. Yeah. Shall I leave? Can you take a water break like before Yes, we you move can to leave. closing? Yeah, let's take a 5 minutes break and then move to closing and Angad sir?
Yeah. जीता Can it be a little shorter break, so like 2 minutes, please? Thank you. Yeah, मैं 3 years Oh, yeah, 2 minutes will work good. क्या लगता है कौन तुम जीत रहे वो जीत रहे Perfect. Thank Yeah. you. No problem. हाँ जी. Give me a second, okay? I have to It's do it. mic off कर लेते. Mic off कर लेते. बनाया नहीं मुझे मैं तो बोल रहा था बनाओ अरे दस भाई Yeah, give me just 1 minute. Like, अभी मैं बात. अरे आगे नहीं ऑफिसर ऑफिसर भाई मैं सुना हमारे दोस्तों के साथ झगड़े हो गए आपस में मुझे 1 मिनट बात करनी है इससे जैक भाई के साथ बताओ फिर मैं अभी नहीं बात कर सकते। हाँ बात बस बोलने दे रहे तो फोन नहीं है बस बना दो। अरे खाना खाना पीना कोई दो ना यार मर जाऊंगा। कचेरी के बाहर सुला करो ना। खाना पीना चाहिए मुझे चाहिए एक अंदर चले अभी इसको लेके चले हम भी लोगों को देते देते हमारे पैसे खराब खाना डेवॉन बड़ा पेपर 40 दिल भाई क्या बताओ पहले माइक बंद करके आओ माइक अभी भी फोन है ये थैंक यू नहीं बंद है I'm sure you're gonna lose. हाँ बंद है ना तेरा नॉर्मल है भाई इंग्लिश वाला था ना चक भाई ठीक है I'm sure you're अरे यार मत डराया मत के फिर डेविड भाई I'm sure you're gonna lose. अभी भी हाथ कांप रहे झूठ नहीं बोल बस हो गया। अंगद सर ने छोड़ दिया तेरे को क्या मतलब God बच्चे के fucking हाथ Barry, में I'm sure मशाल you're पकड़ा gonna दी थी lose. तो जल नहीं कुछ नहीं सही बता रहा बोर्ड के अंदर नहीं होता ना Let's go. सवाल Trevon, let's go. अबे ये वो हाँ सर वाला आवाज केस है आ रही है क्या आपकी। अग्नि जनता पार्टी वाला अबे Trevon, तो हम भी तो थे इसमें हमें तो पता है क्या हुआ था Trevon, I have figured out the timing. अभी पता है मैं नहीं चाहता हूँ बता दूंगा ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी बुलाओ मुझे मैं बात करता हूँ यार आवाज आ रही है आ रही है अब आ रही है थोड़ा बाहर आ रही है ए, भगा रहे मेरे को। चलो ए आगे वो जो तूने उनको दिया था वो देख इंग्लिश मेरा, में बात सही करनी है कि पड़ेगी नहीं? बोलू दादा आपके पास जो मैंने दिया था वो एक बार मेरे को दे दो। क्या है अरे वो उन लोगों ने वो बोल दिया अरे ना, मेरे बर्थडे का मतलब कि इनविटेशन वो था वो बट ये कुछ और ही निकल गया मेरे को नहीं पता। भाई ये दूसरे दल के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको बताओ कोई नहीं अपने ही है। अपने नहीं अपने कोई अपना नहीं हां हमें देख तो सही दे 167 अरे वो मैं देखो उसमें बोलने वाला हूँ अभी अरे closing देखो statement लगा। जो ये है चार्ज है एक्सेप्शन ये बोल रहे हैं कि जो अमेंडमेंट का राइट है उसमें ये नहीं है बे क्या दे दिया मुझे क्या पता अगर भाई कोई तुमने बोल नहीं बोल दिया था। मैंने ये वो- मैंने नहीं दिया था ये क्या यू आर इनवाइटेड टू डॉक्टर लूसीफर बर्थडे तुमने क्या पार्टी दिया था? समझ में आया। ये आपके पास पहले से ही होगा वही बात है मैं ना लगा देना। उन्होंने उसके एक्सेप्शंस पे नहीं गए वो। हाँ मिल तो गया ये क्या है हैप्पी बर्थडे लूसीफर अरे यार आज की वजह से वो 5 तारीख को बर्थडे 4 तारीख को पार्टी है मेरे को दे दे जो जो तुमने दिया हाँ था। मिल गया 4 तारीख को है ना ये 3:30 बजे Am I audible? हां हां क्या You are audible. अच्छा सुनो ऐसे मत करो यार जाओ ऐसे मत करो 100% था या नहीं था ये बताओ। नहीं था भाई तुमने गुल्लू को क्यों नहीं लिया ब्रो मैं जाता हूँ अभी बताता हूँ मैं तुमने गुल्लू को क्यों नहीं लिया स्टेटमेंट नहीं ट्रेवर ने मुझे बोला ही नहीं। अरे गुल्लू को लेना था ना भाई गुल्लू भी तो था भाई जज का परफ्यूम इतना गंदा है ना भाई जज का परफ्यूम जो इधर आओ तुम्हें कुछ सजेशन देना है बोले आया क्या पता मैं चाहूँगा कि आप तुम लोग किसके जीतो साइड में ऐसा वैसे आपका नाम क्या ऑफिसर आपका नाम अरे नेवर ट्रस्ट कॉप एंड अ डॉक्टर आप चाहते हैं कि हम जीते It's been 4 years. 4 years. Okay. क्यों आपको वो चाहिए I'm the प्रमोशन youngest lawyer to have a state. रास्ते से हटाना चाहते हैं ब्रो You're 25 years old. अक्सर इधर है यहाँ है बात करते पहले हाँ फिर बात करते हाँ और तरीके ग्रूव आ जाना ये भी ठीक है हाँ बोलना ग्रूव आ जाना फिर बात करते You know, there's situations is good. All for First Amendment. Don't worry about that. Oh, okay. Well, that's a good thing then. You know, just making sure, man. I don't want ये भी to, you know, so-called I- offend. लास्ट मिनट फिटनेस नहीं ले सकते क्या गुल्लू को थोड़ा फन आ जाएगा रॉबर्ट यू गोना विन डोंट वरी मैन यार ये तो गलत बात है विन डोंट वरी
It's not about winning, Ray. It's not about winning. The lose, come on. It's about Tell him. मेरे जो को चीज ये we धक्का वो मुक्की discuss खत्म हुई नहीं हो रही है वो डीज देख लो जब मैंने कुछ वो कहा तो नहीं हमेशा ही भाई कहता है like afraid or इसके काम ही होगी अरे मुझे क्यों मार रहे हो यार? बैंडेज आज ऐसे खराब हो जाती हैं। तो हील डाई करवा लिया। कटिंग भी करवा लिया। कैसे लग रहा हूँ? एक मिनट। शेरशाह मत बोलना, शेरशाह जैसे नहीं है, शेरशाह किसी के जैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी के जैसे नहीं है, ये तो बहुत लंबा खींच लिया अलग है बिल्कुल। तेरे बाल कलर करवा देता हूँ, क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे बाल? तुम्हारे बाल कलर करवा देता हूँ। अबे क्या चल रहा है? चाय समोसा ब्रेक चल रहा है क्या? इसने मेरे को बोला विंचेंजो ने कि हमें तो मिले नहीं समोसे मफिन मफिन कुछ नहीं मिला। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। नो नो हाँ नो वो होते रहते आई हैं, वाज कभी वेरी माथे पे कंफर्टेबल कभी थैंक यू Hey, Alex? हाँ ये I wasn't comfortable, कटिंग bro. करवा Like ली। I'm wearing new और underwear अच्छे today, लग रहे हो, so अच्छे I लग रहे हो, forgot to अच्छे remove the लग रहे tag. हो, भाई पहले वो लगता था वो तो I'm स्टूडेंट already ऑफ wearing a new, no? I होता ही forgot to जैसा वो remove the tag, and it's quite तो ये एडमिन uncomfortable. लगता कौन है सी मुझे जॉकी देखने में। नहीं, भाई सही बता रहा हूँ ब्लेक तुझे अरे हो गया क्या इसका केस? box वाली. Bummer and Shark Tank India पे आया था. अच्छा अरे इसका केस हो गया। अंगद सर, अबे नहीं यार एडमिन अंगद सर, कौन जीत रहा है केस? चक भाई हम कर रहे हैं केस के चक्कर में बर्थडे पे मत आना, मत भूल जाना। हाय हाँ हाँ मतलब वही हमने कहा कि बैगन का हमारे दिन हार वजह गया, से तू जीत ऐसा जा। दिक्कत ना हो जाए, पर्पल हमने रख कहा लेगा, ग्रीन रख लेगा। You win हाँ now. बस हाँ It's हाँ on बस you. वही मैंने कहा। उसका कलर भी एक टाइम पे हाँ अंगद से वजह से बाल भी चल हाँ रहे वही 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 No, he's अरे liar. काला He बना ले, he काला बना himself ले। doesn't have one car, नहीं man. लगता एडमिन नहीं लगता अंगद से You should have asked Lucas. No, Trev. लेक्चर ब्राउन करवा लो, आपको कोई सीन नहीं। It's not his. अरे ब्लैक करा It's ले, ब्लैक rented. करा ले। करवा लेगा Like, it's on lease. भाड़े पे लिया उसने से भाड़े पे। Listen, English man, just ask them. My last witness will be Kullu said. अरे नहीं, एक बार इनके पूरे बाल आ गए You will थे, win. पता नहीं गंजे हो गए। टगल तुम्हारे ये सर पे से खोंच किसने मार दी है? गैप The बना opposite lawyer. I will let you win. I'll let you win. I know him, but it's not like टच हो गई that. थी Mark my words. Mark He's my my- word. भाड़ा He's खाऊ my बैगन fan, के bro. बाल. Mark my word. I'll let you win. No, that's it. He's not a friend, you know. Yeah, I ain't gonna lie to you. He's good at his job, bro. नहीं know. नहीं थोड़ा बहुत Vincenzo is So short. after objection, He's not good at his job. Vincenzo is weak, bro. Okay, but कटा that लगनी है, makes तुम्हारी दाढ़ी की वजह से लगते हो तुम। yeah, like he's good lawyer, bro. Like But every objection compare- seems legit, bro. Bro, Bro. there's the best थोड़ा lawyer. अलग है, थोड़ा हाँ तो Alfred, चिन but थोड़ा he's not लंबा around. है। I'll tell you. So if you compare 10, Not 10 ठीक है ठीक है। दाढ़ी bro, वैसे bro, करके if you'll compare 10 bananas with 20 bananas, so obviously 20 bananas is more, but that's not the maximum number of bananas you can have. Yeah. But तब listen, पता चले। it's all good, bro. Listen, maybe we take a loss today. भाई बैंडेज खराब मत You करो, know, we may 25 lost the लिए थे fight, कल, but we 20 didn't lose the लिए थे, war. अभी 10 बचे हैं। Exactly, खत्म bro. We'll करवा call दो, Barry, मार you know. मार के। Exactly. And if I come here next time, I murder fucking 5 cops. यहाँ से I'll make sure I win. The first one will be Robert on the list, you know. Listen, bro, my next court case, if it ever happens, bro, I'll make sure everything is in fucking check. Cause I came here and he asked me how long was you in the back car of the seat. I said 20 minutes. Apparently, my lawyer says 15. And all of a sudden he's like, objection. This guy's playing the bro, like, yeah, bro, I ain't gonna lie. Bro, he was like reading the case, like, you know. Yeah. I guess I didn't do my homework well enough. वैसे ब्लेक It's not बात about पता you, it's है? about the lawyer, bro. सो जा भाई। He did send me something, but I didn't see all that. भाई आप लोग संगे वैसे भी इतने दिन तक छुट्टी पे थे, अब बराबर भी तो करनी है। तभी बोल रहा हूँ बेचारे की अभी भी आवाज देख। You know what? You know what? अरे इसका तबीयत भी ठीक नहीं है। Instead of हाँ वही बोल रहा instead of हूँ। LS custom, you could have like gone to pit stop. अरे तो क्या दिक्कत है? आंखों पे पट्टी मारो जो। वो एयरप्लेन में कौन सा हो क्या होता है? ब्लाइंड फोल्ड। Or you know, see pretty much low key. ये कौन सा रूम है? हजारों दरवाजा है, हजारों दरवाजा है। रेड हेड्स मिलता है दरवाजा है। खड़ा है जरा रेड हेड्स मिलता है। पीछे आ जा, पीछे आ जा। ठीक है चलो देखो। It's on, let's go. All the best.
Yeah, let me take my loss, man. Yes. Eh? अब ये जीत जाता ना तो ये खोलने वाला था सिक्योरिटी का बिजनेस अपना लॉस हो जाता बताओ कैसे अभी तो तुम कुछ की मार रहा है जीतना जाए भाई चुप हो जाओ Can we please begin with your closing statements? कहाँ गए ये? पता नहीं सर पता नहीं अंदर तो पता है लेट अस Okay, let's wait. Oh, he's there. Yeah, Can we please begin with the closing statement? अंगद भाई सर खाने को you दो there? कुछ कोई और Angus sir. कितना खाना खाएगा चल हाँ कितना भाई तब से मैंने एक भी नहीं खाया तब से खाए जा रहा है मेरा Should I सारा begin? नहीं खाएगा Yes. So, throughout the case, we have presented evidences, testimonies that shed light on the unfortunate events surrounding Trevon James, and Officer Robert Wilson. What started as a simple report of assault outside the city hall quickly escalated into a situation that has now been brought to us in this courtroom. We have showed that Trevon James came to Officer Faisal seeking help and justice after he was allegedly assaulted by Mr. Takat Bilzerian. Instead of receiving a proper protection he deserved, he was met with inaction. Wilson made the controversial choice of arresting Trevon James for expressing his opinion, an opinion which is protected under the fundamental rights of freedom of speech. That too confirmed by Mr. Officer Faisal on the stand. The Mr. Trevon James was arrested and the rights was read to him. And after that also, if you check the MDT report, there is no report on, like, if you check the MDT, there is no report about this incident at all. सुन भी नहीं रहा होगा पक्का Also, Mr. Robert Wilson denied, जल्दी I बोल won't दो say फिर उठा denied, but Officer did not dared to come on the witness stand and state what has happened there. He clearly feared about the situation and he didn't come over. Moreover, we have shown that the arrest amounted like wrongful prosecution, causing Mr. Trevon unnecessary emotional distress and hardship. Instead of protecting and serving, Officer Wilson abused his power and violated the trust that public has placed in him as a law enforcement officer. As the evidences have unfolded, it has become clear that Mr. Trevon James is being a victim of the situation. He sought help from every individual tasked to maintaining the peace, and instead he was met with the unjust treatment and arrest that should have never been आप भी तो happened. केस करो फिर I would like to request the court uphold our civil laws and to set a precedent from this case, protecting every citizen's First Amendment right, which is freedom of speech and expression. Thank you, Your Honor. I rest my case here. My lord. Replication. पक्का पढ़ के आया है Your Honor, Yes, gentlemen. The depth. I am appalled today in this courtroom, not by this case, but by the incident that took place with Mr. Trevon James and how he was represented. Mr. Vincenzo in his closing statement mentioned that Robert did not come on the stand. Yes, the prosecution did not have enough witnesses to call him on the stand. They did not have a shred of evidence to ask him any question. The prosecution's first witness should have been Mr. Robert. But because of lack of evidence, he wasn't called on the stand. नील सर In terms of the charges, they meant civil rights should be upheld. Two of the charges are criminal charges here. आवाज आ रही है मेरी First, आ रही है being wrongful तेरा कोई prosecution. गाना गा रहा है Throughout the evidence, there was प्यार से बोल no Judge mobile चला रहा है. formal arrest booked. Not interested. There's no evidence of a formal arrest book. There is no MBTT record, as the prosecution said. There is no jail time. There are no charges levied. The only thing which every officer and every person in this room said was there was only a warning. There was a detention which was for an assault complaint. Yes, I agree. There was a election situation over there. He was on election duty. It was chaotic, as Mr. Faisal mentioned, and Judge Mr. bhai to Robert bus Wilson. चला रहे बे.
sought out the best possible outcome where he was a genuine officer and tried to diffuse the situations by warning both and then detaining Trevon James, whose behavior at that point was overly aggressive, mentioned by a few of the witnesses. Moving on, in the violation of the First Amendment, as I mentioned, there are some exceptions. First Amendment prohibits speech that causes breach of peace and which incites violence. I would also request this your lordship to also add exceptions such as advocacy of legal action, fighting words in case bitch as corrupt officer, commercial speech and obscenity as exceptions as well. केस इतना लंबा चला गया इतनी छोटी बात का केस नहीं है ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है I would also request to add a legislation known as contempt of cop, which is present in a lot of great nations on this planet, wherein a person can challenge or oppose police action, but their speech should not include profane, rude, or insulting manner and should not be verbally abusive. We must uphold the right of our police officers who do their duty perfectly. The First Amendment right does not give you the right to be rude to the police and uttering fighting words which by their very utterance inflict injury or tend to incite breach of peace. The police has the right to detention. Coming to defamation, things that the prosecution needed to prove. A false statement perpetually to the fact of a publication or a communication or a statement to a third person. In this case, Robert made none. Fault amounting to negligence. In this case, Robert made none. Damages that are tangible. In this case, there were no tangible damages proven to Trevon James. They did try to sneak in the LS Customs part, but it was quickly stricken off by the prosecution itself, calling their witness hostile. Our defense to this is truth. The incident which took place was wrong, and Robert did the right thing. Thank you. बोलो भाई के जज Can everyone hear me? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today's case has been a roller coaster ride of emotions throughout since the time we started. There were moments when it felt like Vincenzo was absolutely right, and then there were moments when it felt like Angad was absolutely right. Felt like personal opinion. There were a lot of times again when it felt like we were completely digressing away from the case. However, Vincenzo, in his closing statement, made the absolute right point, which was about the freedom of speech. Freedom of speech. Vincenzo सही है, अपना lawyer सही है कह रहा। थोड़ा सा सही है। If freedom of speech is something which will be stopped and barred in this city, then the civilian voice and the rest of the civilian rights are also in danger. कैसे अभी? पहली बार प्यार आ रहा है जज पे। So I would like LSPD department to pay what? Berry by cancel? To pay a compensation of 10,000 rupees, $10,000 to Mr. Trevor. However, we cannot
just ignored the fact that the language which was used by Mr. Trevor, even though it was a slang for him, in a civil world, it is something which is disrespectful. So from that compensation of $10,000 will be removed the fine of disrespecting a police officer, and the remaining amount shall be given to Mr. Trevor within the next 48 hours. माइकल को भी बुला लो I am striking off the case. I'm striking off the charges of defamation and others. But yeah, freedom of speech is something which needs to be held at the highest standard. And that is the reason, the compensation needs to be provided to Mr. Trevor for him being arrested just for voicing out his opinion. Although the way he voiced out his opinion was also incorrect, and that is why he will be the fine of disrespecting a police officer will be deducted from $10,000. The court is adjourned. Thank you. Thank you so much, Vero. Thank you, George. Appreciate it. खत्म चलो अंगद सर गले मिले रुके गले मिले भीख में मिली इसको अबे जीते भी नहीं है हारे भी नहीं है हुआ क्या है टाई हो गया $5,000 चिपका के भगा दिया इसको ये बारिश ये 5 दिन का टेस्ट में जब ड्रॉ जाता है जो फील आती है वो फील आ रही है क्या एक मिनट बारिश अंगद सर से गले मिलने दे हमें बारिश आ गई लगता है चलो क्या मना रहा है कि जैसे बहुत दबा के जीता है अरे पर इसने ये ट्रेवियन ने क्या क्या कराया मुझसे ये केस के लिए इसके लिए ये क्या ड्रॉ है क्या है ये क्या करा दिया सर कंट्रोल पता नहीं क्या हुआ गिव मी 1 मिनट आई विल अबे दारू पी के लेटा था पड़ता था मैं इसको उठाता था इसमें से चले जाओ वो चेंबर्स में होते हैं इसने उल्टी भी तो करी थी तुम पे हां वो चक जी को आदत होगी उल्टिया को तो बहुत बच्चे रहे होंगे जवानी हाँ वो तो चक को आदत है लाइक उल्टी करने वालों को संभालने की इसको सहन नहीं होती वो बात देखो चक भाई आखिरी में मैंने कुछ उसको बात बोली आखिरी में स्टेटमेंट चेंज हो गए और अब खुश है ऑफिसर बात मैंने भी सेम बोली वही मैंने तो उसको बोला था ये चुपचाप कर रहे खुश लग रहे हो भाई मेन पॉइंट तो अमेंडमेंट का ही था वही सो दैट्स इट लो इस काम कर लो मुझे पूछनी है अरे डिसरिस्पेक्ट तुमने विटनेस बॉक्स में बैठे ठुल्ला वर्ड बोल दिया अरे दैट इज स्लैंग दैट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट फॉर मी आई मीन दैट इज स्लैंग यार इंडिया में से बोला तूने कल पता है माइक्रोस करके एक लॉयर था ठीक है रिजाइन कर दिया उसने तो हाँ पता है क्यों किया क्योंकि मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ओपिनियन में तुम चूतिया भोसड़ी वाले मादर चो दो ऐसे करके उसके मुंह पे बोला मैंने तो मेरे को बोलता है कि मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ मैंने कहा भाई वी आर 18+ तुम्हें गाली में प्रॉब्लम हो रही है उसमें देख के उसने रिजाइन कर दिया अरे वो कह रहा था उसके पहले भी कुछ सिचुएशंस हुई थी जिसमें उसको टारगेट करा ऐसा इसलिए भाई वही टारगेट होता है ना और कोई तो होता वही तो भाई क्रिमिनल हमें टारगेट करेंगे और हम अगर वकील को नहीं करेंगे तो कैसे चर्चा चलेगा बात सही है मेरे को ये देखना है अल्फ्रेड भाई रिजाइन करने के बाद जब तुम्हारे अपोज में जाएंगे तब क्या मजा आएगा वो ऐसा होने देंगे नहीं ना ऐसा होने देंगे नहीं हाइपोथेटिकल भाई हाइपोथेटिकल ऐसा होने देंगे चलो अल्फ्रेड भी इनके साथ घुल मिल गया अब नहीं करेगा वो इतना हाँ अंदर अंदर से हृदय परिवर्तन हो गया है किस कॉन्टेक्स्ट में बता किस अंदर से यू गाइस ही अंदर से हृदय परिवर्तन कर दिया है ही कम्स टू ही इज नो मोर अ डार्क साइड किसी को इससे बेटर तो मेरा था ना मैंने 5 दिन के लिए सस्पेंड तो कराया अरे बोल अरे congratulations bro नहीं मिलते उसमें Hey, thank you, man. I knew what I was gonna win today. You know, I felt it in my heart, man. I pray, I prayed and shit. It's like a win-win for both. I think Moro. Yeah, of course. But the most important thing where I came from, that's the First Amendment right. It was proven that it felt like my grandma. Like if she has $100 and I have a sibling, instead of giving $100 to me, she gave 50-50 to both. Now I am happy as well. I am sad as well. Right? Yeah, and I'm happy as too, bro. That's a good thing. Yeah, nice. Yeah. Yo, don't get into dirty business, man. Hey.
खराब नॉइज के लिए मैंने कहा यार बात कर विंसेंजो भाई सुनो मेरी बात। बोले Next- बोले हाँ आप जी, नेक्स्ट टाइम कोई केस नहीं लड़ना, मेरे पास आना, किसी भी कॉप को सस्पेंड कराना। 5 दिन के लिए कराया भी एक को, नेक्स्ट टाइम आना। किसको 5 दिन सस्पेंड करा? रॉक बता रहे थे नेक्स्ट विक्रम टाइम मेरे बोला पास 5 आना, दिन मैं के उससे लिए एक क्वेश्चन सस्पेंड पूछूंगा, आर यू डम? 5 दिन के लिए सस्पेंड। नहीं, उसके लिए नहीं सस्पेंड हुआ है वो, बाय द वे तुम्हारी नहीं चीज वैसे के लिए विक्रम भाई नहीं। ऐसा सेलिंग वो पलेडियम आ रहा था विक्रम भाई का। सेटिस्फाई होने दो, सस्पेंड हुआ है। सेटिस्फाई होने दो थोड़ी देर, तो बेबू जितने हो रहा है सेटिस्फेक्शन तो के लिए मैं तो ऐसे नहीं मैं सोचूंगा तो मेरी बता बात रहा हूँ अरे मैं विक्रम बता भाई रही हूँ तुम्हें कि वो मैं तो तुम्हारी थोड़ा सोचूंगा यही। पीस मिल रहा है, थोड़ा पीस मिल रहा है, उसको तुम्हारी लेने दो। सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ था, इट वाज समथिंग एल्स। मैम मैं हमेशा सही बोलता हूँ और मेरी सिचुएशन की वजह से हुआ है। कोई नहीं नाइजल भाई खत्म। I feel disrespected by your statement. नाइजल भाई दोनों में अपना ये मजा है। ये टायरोन को कहाँ से पकड़ के लाया तू? टायरोन को थोड़ी पकड़ के लाया है। नहीं क्योंकि ये मेरे को कोई दिखा सुनी आवाज लग रही है, बहुत ज्यादा जान पहचान लगा है। वही पहचान है जो आप समझ रहे हो। टायरोन थोड़ी है, ट्रेवोन है। वही है। अरे हाँ वही ट्रेवोन है मतलब वो। ट्रेवोन, वहां पर कुछ और वो नाम समझ सा गया, ऐसा वो लगा। समझ गया। वही है, वही है, वही है। नहीं वही वो मेरे से ऐसे बात करने को, मैंने कहा है आप यहाँ, मैंने कहा अरे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा फ्लो बह रहे हैं हम लोग, थोड़ा ज्यादा बह जाएंगे। विंसेंट तो बहुत ज्यादा खुश है, चलो जाओ पार्टी करो। फाइनली स्ट्रीक टूटी है, फाइनली स्ट्रीक टूटी है। कोई स्ट्रीक नहीं टूटी। अबे और जल्दी टूटती थी। पता है क्या है? फालतू का केस पता है क्या हुआ एक्सटेंड किया है विंसेंटो? तूने। जैसे होता है ना, तुम बचपन में मम्मी को दे, मम्मी 5 रुपए दो ना, मम्मी जान छुड़ाने के लिए ले भाई 5 रुपए, वही यार इतना तो सच मत बोलो। हाँ जी चलें और विंसेंटो ड्रॉ खेल गया, लॉस नहीं, एल नहीं मिला, कौन आया एल था? नहीं मिला विंसेंटो। रॉक हाँ कोई आया था नहीं यार, बताए। लो भैया लो, ये इसका क्या करें? अपने मतलब देखो, अरे मैं विंसेंटो को लिफ्ट देने जा रहा हूँ, सॉरी कर रहा है, यार मैं तो चाहता हूँ। डिपार्टमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, भोसड़ी वाले हैं। अरे वो रुको मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ क्या इलाज करा भाड़ा क्यों? लेने आ जाऊंगा मैं, लेने आ जाऊंगा। सर थोड़ी देर बाद सर हॉस्पिटल आ जाना। हाँ सर मैं आऊंगा। नाम तो पूछ लो, नाम तो पूछ लो। आपका नाम? पाशा है सर, पाशा। हाँ पाशा भाई, मैं कॉल कर लूंगा। पाशा ये जैकेट मत पहना करो। सॉरी सर, आ रहा हूँ। उतारो जल्दी सर, पूरा शर्ट निकालना है सर मुझे। हाँ उतार दो पूरा जैकेट। ठीक है सर। सर मैं नंगा नहीं जा सकता सर, मैं अभी जाके दूसरी पहन लूंगा, ठीक है? जल्दी पाशा दोबारा दिखे, ये कहीं ऐसा बंदा दिखा ना कोई और भी पहन के। आना पिक करने भाई। गाड़ी कहाँ है? ग्रुप पे ड्रॉप करोगे, ग्रुप पे। अरे क्या कह रहा है? ये क्या सीन हुआ? ये दोस्तों डिजाइन दे रहा है, क्या सीन है? कौन डिजाइन दे रहा है? सर जेकब है, जेकब ना कोई तो नहीं मिल रहा, कोई तो नहीं मिल रहा हमें भी। क्या हुआ था? कौन डिजाइन दे रहा है? दोनों ये डिजाइन, ये चालू और ये इसका क्या सीन? अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। किसको पता है? किसी को नहीं पता, खाली बेबो को पता होगा। एचआर लिखा तो है रीजन उसमें। अरे तो कैंसिल भी तो हो गया। हाँ तो एचआर ने बात करके कन्विंस कर दिया एचआर ने। मेंटली हरास्ड हिम जस्ट बिकॉज़ वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं है। कन्विंस कर दिया, कन्विंसिंग पेपर दिखाइए बेबो जी ने आज अपनी ड्यूटी पे लेके आके लड़का पकड़ के। नहीं आपको प्रोसेस कर देना चाहिए था।
लेकिन बहुत बढ़िया किया। मैंने अपनी थी यार, वो रह गया था। रिपोर्ट बनवा देंगे मैचो। ये करते रहो तुम बस, ये करवा दो वो करवा दो। किधर हो आप? बिठाओ मेरे को, चलो। अबे अरे 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 अरे, गाड़ी में हेलमेट पहनते हैं लोग, नाइस। ये भी आपकी नहीं है। बेबोकी बेबोकी। अरे बेबो है यहाँ पे, उसकी गाड़ी है। हाँ पता है। चलो फिर मेरे को छोड़ो, चलो फिर हमको भी छोड़ो। आप में पीडीपी 10 रुपए 10 रुपए पीडी 10 रुपए 10 रुपए लिखना, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अरे भाई बच गया रोबर, सस्ते में खेल रहा। 10,000 ठीक है यार, मतलब रिस्पेक्टिंग अ लियो ऑफिसर कितने डॉलर का फाइन है? 2000 ना? हाँ 8,000 जाएंगे मतलब उसको। 8,000 तो रोबोट ऐसे ही बांट देता। ओ लाइन है भाई, लाइन है भाई, लाइन है भाई, लाइन है भाई। क्या लाइन थी, क्या लाइन थी? जेन्युइन लाइन थी, जेन्युइन। हम एक को रेस कार बनाने का सोचे, ये जेन्युइन। हाँ मम्मी, ये भी लाइन अच्छी है भाई। मैं जा रहा 42, यू गाइस एंजॉय, बाय बाय। इवन मैं भी चला 42। नील भाई हमारा नेता कैसा हो? मेरे टोपे जैसा हो। अरे भाई मेरे टोपे जैसा हो, बोल। पकले हो भाई। Ready going. तो 595 पड़ रहा। 330 back on ready one. 330 going 42 for the day. 4